चांगलं व्यासपीठ मिळावं, त्यांची प्रतिभा, त्यांचं कौशल्य, त्यांचं टॅलेंट दाखवण्याची संधी त्यांना उपलब्ध व्हावी, यासाठी सन्माननीय नगरसेवक, अपॅक्स काउन्सिल मेंबर, MCA सन्माननीय श्री विकासजी रेपाळे साहेब यांच्या संकल्पनेतून आणि महाराष्ट्र राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली या स्पर्धेचं आयोजन, हे वर्ष 14वे, एडिशन 14, 13 वर्षाचा प्रवास, परिवर्तनाची भरारी खेळाच्या विकासासाठी, हे ब्रीदवाक्य घेऊन उतरलेली ही स्पर्धा आज ठाणे शहरात चर्चेचा विषय आहे. नवीन खेळाडूंना म्हणजे उदयनमुख खेळाडूंना अनुभवी खेळाडूंबरोबर खेळण्याची संधी ही स्पर्धा देते. ठाण्याच्या मानबिंदू असलेल्या दाजूकंदू स्टेडियममध्ये ही स्पर्धा आणि मेन विकेटवर खेळणं एक अभिमानाची गोष्ट. दोन्ही टीम बेनेटॉन क्रिकेट क्लब आणि ठाणे वॉरियर्स अकॅडमी, आपण पूर्ण संघ, बोथ द कॅप्टन लिसन केअरफुली, आपण पूर्ण संघ घेऊन फोटोशूटसाठी मेन स्टेजजवळ यावं. बेनेटॉन क्रिकेट क्लब आणि ठाणे वॉरियर क्रिकेट अकॅडमी, प्लीज कम फॉर द बेस्ट फोटोशूट. 9:20 द टाइम फॉर द टॉस. लिसन केअरफुली, दोन्ही संघ प्लीज. फोटो बिटो घ्या नाही, रात्री कुठे भेटला तर सोय आहे ना माझ्याकडून. कल्पना नीटा Thane Warriors Cricket Academy. I request all the players please come for the photo shoot, and Benetton Cricket Club please जरा आपण फोटोशूट साठी त्वरित यावं. 9:20, 9:20 the time for the toss. The crucial match. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन मान्यता प्राप्त ही स्पर्धा. दिग्गज खेळाडूंनी भरणा असलेले सर्व संघ, 16 संघ एक दुसऱ्याशी लढतायत. 8 दिवस हा प्रवास सुरू आहे. यज्ञ आहे क्रिकेटच्या प्रगतीसाठी, क्रिकेटच्या भरारीसाठी. आपल्या सर्वांचं स्वागत. आय रिक्वेस्ट अगेन द ऑल टीम प्लीज कम फॉर द बेस्ट फोटोशूट. काही आठवणी आपण या स्पर्धेच्या निमित्ताने एकत्र येतो, त्या आठवणी आपण नक्कीच आपल्याला पुढे आपल्या करिअरमध्ये एक वेगळी उभारी देतात. सर्वांचं स्वागत आहे. कौस्तुभ पवार यांचा संघ असं म्हटलं तरी चालेल, ठाणे वॉरियर्स क्रिकेट अकॅडमी.
I request both the captain please move towards the main wicket for the toss. The day 3 TPL season 14 day 3. सभी दिग्गज टीम यहाँ पर जो खेल रही है उसमें काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर्स, टॉप क्लास प्लेयर खेलते हैं जो मुंबई रणजी टीम से, चाहे आईपीएल से, चाहे अंडर-19 वर्ल्ड कप हो, वीरेन ट्रॉफी हो, बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी यहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और यही इस स्पर्धा का मेन विषय है। इस प्रतियोगिता का काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जाता है। ठाणे के जो क्रिकेट खिलाड़ी है उनको अगर अलग एक प्लेटफॉर्म इससे मिलता है, जिनकी वो प्रतिभा हो, उनका टैलेंट हो, वो दिखाने का एक अच्छा मौका जरिया यहाँ पर मिलता है। वेळ आहे आता नाणेफेकीची। दोन्ही संघ कर्णधार आपण पाहताय बेनेटॉन क्रिकेट क्लबचे कर्णधार राहुल सोलकर, त्याचबरोबर ठाणे वॉरियर क्रिकेट अकॅडमीचे कर्णधार कौस्तुभ पवार, हे दोन्ही कर्णधार मैदानाच्या कडे प्रयाण करताना। The time for the crucial toss now, guys. Now, the result. Thane Warrior Cricket Academy won the toss and elected to bat first against Benetton Cricket Club. The news from the center. Toss का बॉस कौन? Thane Warrior Cricket Academy won the toss, elected to bat. The day 3, the crucial match between the two top team. दोन्ही नामवंत संघांमधली ही लढत थोड्या वेळात सुरू होईल. नाणेफेकाचं कौल ठाणे वॉरियर क्रिकेट अकॅडमी
या संघाच्या बाजूने लागला आणि त्याने प्रथम फलंदाजी स्वीकारली. हॅलो, जरा दोन्ही संघांनी कृपया, दोन्ही टीम जे सराव करतात दोन्ही संघ कृपया एक विनंती आहे, आपण एक खास सत्कार ठाणे प्रीमियर लीग सीझन 14च्या आज दिवस तिसरा पहिल्या सामन्याच्या निमित्ताने करतो. टीम ठाणे वॉरियर क्रिकेट अकॅडमी, टीम बेनेटॉन क्रिकेट क्लब, जरा कृपया आपण मुख्य व्यासपीठासमोर जो प्रेझेंटेशन एरिना आहे त्यासमोर यावं प्लीज. दोन्ही पंच सुद्धा जरा दोन्ही संघ प्लीज. हा फार मोठा हा क्षण आहे, कारण आपण साक्षीदार आहात आज आपल्या ठाण्याच्या दादोजी कोंडू स्टेडियममध्ये. तो खेळाडू आज आपल्यामध्ये खेळताना आपण पाहणार आहात, ज्या खेळाडूच्या नावानेच ओळख झाली, प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं, ते लेजेंडरी प्लेयर ज्यांच्या नावावर चित्रपट निघतो. माणसाने कशा प्रकारे खेळाडूंनी पुढे यावं, वय हे खेळाला कधीही आपण अवलंबून राहू नये असे नेहमीच प्रेरणादायी आणि सर्व खेळाडूंना एक स्फूर्तिदायी व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जाते. स्पोर्टिंग क्लब कमिटीचे सतीश नाचणे सर आज आपल्यासमोर उपस्थित आहेत. आज त्या खेळाडूचा सत्कार मंडळी आपण करत आहोत. IPL चॅम्पियनशिप प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ज्यांनी आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण केला असा खेळाडू, म्हणजे ज्यांना पाहून अनेक क्रिकेटपटू घडले असा हा सितारा, स्टार, द डायमंड ऑफ क्रिकेट, ओन अँड ओनली वन, ज्या नावाची ओळख आज सर्वांना आहे, चिरपरिचित असं पर्सनॅलिटी. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया लेजेंडरी क्रिकेटपटू प्रवीण तांबे सर. आज हा आमचा सन्मान आहे की प्रवीण तांबे सरांचा या इथे सामन्याच्या सुरुवातीला सत्कार करण्यात येत आहे. वय एज इज ओनली फिगर असं नेहमी ते सांगतात. आपल्यामध्ये खेळण्याची जिगर ही मोठी पाहिजे हे सांगणारे प्रवीण तांबे. खरंच आज हा मोठा क्षण आहे की प्रवीण तांबे सरांचा इथे आम्ही सत्कार करत आहोत. आणि आज ते बेनेटॉन क्रिकेट क्लब मधून आपण खेळताना त्यांना पाहू शकाल. आज ठाणे प्रीमियर लीग पर्व 14 मध्ये प्रवीण तांबे सर आज स्वतः परफॉर्म करत आहेत. ठाणे प्रीमियर लीगचा आजचा सामना दोन दिग्गज संघांमध्ये प्रवीण तांबे सरांची उपस्थिती आज बेनेटॉन क्रिकेट अकॅडमी क्लबच्या या संघामध्ये. ठाणे वॉरियर क्रिकेट अकॅडमी संघ समोर, तोही एक जबरदस्त तुल्यबळ संघ. फाईट मोठी, सामना मोठा. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया आणि थोड्या वेळातच सामना सुरू होईल. एका बाजूला कौस्तुभ पवार सारखा एक दिग्गज खेळाडू,
या संघाचं नेतृत्व करताना बघतोय ठाणे वॉरियर क्रिकेट अकॅडमी संघाचं राहुल सोलकर सारखा एक जबरदस्त खेळ जो बेनेटॉन क्रिकेट क्लबचं प्रतिनिधित्व करतोय। दोन्ही संघात टॉप क्लास क्रिकेटपटूंचा भरणा आहे आणि हा सामना नक्कीच दर्शकांच्या पसंतीस उतरेल हे पाहूया आणि थोड्या वेळात पुन्हा भेटूया सामन्याच्या सुरुवातीला। सर्व क्रीडा रसिकांचं त्याचबरोबर सर्व संघांचं खेळाडूंचं आणि CricLive.inच्या माध्यमातून जे क्रीडा रसिक या स्पर्धेचा घर बसल्या आनंद घेत आहेत त्या सर्व मायबाप क्रीडा प्रेक्षकांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। ठाण्याचा मानबिंदू असलेला दाजी कोंडू श्रेणीमधून मी प्रदीप देसाई आणि माझे सहकारी आनंद श्रेष्ठ आपलं स्वागत करत आहोत। ठाण्याच्या क्रिकेट
साठी संजीवनी देणारी स्पर्धा असा उल्लेख ज्या स्पर्धेचा केला जातो ती स्पर्धा म्हणजेच उपमुख्यमंत्री चषक 2026, ज्याला क्रिकेट वर्तुळामध्ये ठाणे प्रीमियर लीग म्हणून ओळखलं जातं, ती स्पर्धा म्हणजेच TPL 2026 एडिशन 14. आणि आज दोन दिग्गज संघ, दिवस तिसरा, दोन दिग्गज संघ मैदानात आपण पाहताय. बेनेटॉन क्रिकेट क्लब विरुद्ध ठाणे वॉरियर क्रिकेट अकॅडमी. आपण नाणेफेकीचा कौल लागला तो ठाणे वॉरियर क्रिकेट अकॅडमी संघाच्या बाजूने. त्याने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, 5 रन केलं. बेनेटॉन क्रिकेट क्लबला क्षेत्ररक्षणासाठी बेनेटॉन क्रिकेट क्लबमध्ये आज ज्या खेळाडूचा सहभाग आहे, ज्या खेळाडूच्या नावानेच आज एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे, ते नाव म्हणजे प्रवीण तांबे सर. आज त्यांची उपस्थिती बेनेटॉन क्रिकेट क्लबच्या संघामध्ये राहुल सोलकर, किरण सोलकर, सनवेद, अभिषेक यादव, सचिन सिंग, करण पाटील, इम्रान हक, नरेंद्र यादव, अतुल गोसावी, फिरोज कुरेशी, योगेश पवार, प्रवीण तांबे अशी जबरदस्त स्टार कार्ड असलेली हा संघ. दोन्ही संघांना कर्णधारांना विशेष विनंती, दोन्ही संघ कर्णधारांना विशेष विनंती, पहिला चेंडू पडायच्या आतमध्ये समालोचन कक्षामध्ये आपले 12वा खेळाडू असणं जरुरी आहे. कृपया एक्स्ट्रा प्लेयर आपले जे आहेत त्यांना कृपया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण त्वरित पाठवा समालोचन कक्षामध्ये प्लीज. Please send your extra person in commentary box before deliver the first ball. It's humble request to the both. पहिला चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढला, पॉइंटच्या दिशेला निर्धाव चेंडूने सुरुवात केली आहे. इम्रान हक हा मध्यगती तेज आक्रमण इम्रानच्या रूपामध्ये स्ट्रायकर बॉलर आघाडीचा गोलंदाज कॉमेडी बॉक्सिंगकडनं सुरुवात करतोय. एक स्लिप तैनात करण्यात आली आहे. दरम्यान दुसरा चेंडू घेऊन इम्रान यावेळी फुलर लेन चेंडू उजव्याटीच्या बाहेर जागेवरच मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बिगिट करण्याचा प्रयत्न, प्लॅन मिस पाहायला मिळतोय, स्विंग अँड मिस पाहायला मिळतोय. टप्पा चांगला ठेवला होता इम्रानने यावेळी. लाईन अँड लेंथ परफेक्ट. ऑफस्टम आणि ऑफस्टमच्या बाहेर चेंडूला ठेवला, हलका वळलाय सुद्धा चेंडू. डीप थर्डमॅन लेग खेळाडू आहे, 30 गज दायऱ्याच्या बाहेर एक खेळाडू डीप मिड विकेटला आपण पाहतोय.
बाकी सर्व खेळाडू 30 गज दारेच्या आत. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक मार्गस्थ. इम्रान आपल्या गोलंदाजच्या मार्कवर. हा थोडा आखूड टप्पा बरोबर बॅकफुटला रोल होत शॉर्ट पूल जॅम. चेंडूला खालीच ठेवला यावेळी फलंदाजांनी. डीप मिड विकेटला तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आला. एक धाव तर निश्चित मिळते. धावसंख्येचं खातं उघडलं गेलं. श्री गणेशा केलं आहे. ओम शुभम भाऊ सुरुवात केली आहे धावसंख्येची. पॉइंट कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ. उजव्या बाजूची व्यूहरचना, डाव्या बाजूला मिड ऑन, शॉर्ट फाईन लेग इन सर्कल आपण पाहताय. सहा खेळाडू ऑफ साईडला, 3 खेळाडू लेग साईडला. या व्यूहरचनेसह इम्रान पुन्हा एकदा. यावेळी फ्रंट फूट ड्राईव्ह, नाईस पुश. वेग वाढवावा लागेल. चोरटी धाव नक्कीच काढली. अंडरस्टँडिंग पाहायला मिळालं, सामंजस्य पाहायला मिळालं. दोन्ही फलंदाजांचं स्ट्रोक विथ द रन निघाले होते, त्यामुळे धाव घेण्यास काही दिक्कत नाही आहे. दोन्ही फलंदाजांनी आपलं खातं उघडलं आहे. इम्रानकडे वेगही चांगला आहे आणि टप्पा दिशा योग्य राखली आहे या षटकामध्ये इम्रानने. यावेळी शॉर्ट ऑफ प्लेन पुल करताना ठीक बॅटवाला नाही आहे. मिडांच्या खेळूच्या पुढे चेंडू पडतोय. एक धाव नक्कीच मिळते, परंतु उसळी घेणारा चेंडू होता. हाफ ट्रॅकर आखूड टप्प्याचा. 3 धावा धावफलकावर दर्शवत आहेत. आतापर्यंत हे षटक चांगलं हाताळलं आहे इम्रानने. दोन्ही फलंदाज वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत पाहायला मिळाले. इम्रान पुन्हा एकदा. यावेळी फ्लरिश ड्राईव्ह जरा हवेतच फटका खेळला होता पॉईंटच्या डोक्यावरनं. जिथपर्यंत क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचेल एक धाव निश्चित मिळते आणि याबरोबर हे षटक इथे समाप्त होतं आहे. पहिल्या षटकात बिनबाद 4 असा धावफलक दर्शवतोय. इम्रानचं एक चांगलं षटक म्हणावं लागेल. जास्त मोकळीक दिली नाही फलंदाजांना. टप्पा दिशा योग्य राखली. 2 आखूड टप्प्याचे चेंडूही पाहायला मिळाले. चला दुसऱ्या षटकाकडे. फार एंडकडनं आपण पाहतोय कदाचित स्वतः कर्णधार राहुल सोलकर आपण गोलंदाजीच्या मार्कवर पाहताय. बेंटॉन क्रिकेट क्लबचे कर्णधार राहुल सोलकर फार एंडकडनं. मध्यमगती तेज आक्रमण दोन्ही बाजूने. आयुष सामोरं जातोय. पहिला चेंडू थोडा फुलरलन डिलिव्हरी, जागेवरून चेंडूला खेळून काढलाय. फ्लरिश ड्राईव्ह मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये थोडा वाईडच प्लेस केला होता, त्यामुळे एक धाव घेण्यात काही दिक्कत नाही आहे. स्ट्राईक बदलला गेलाय. स्ट्राईक रोटेट होतोय. एक स्लिप तैनात करण्यात आले. कॅचिंग पोझिशन आहे. वाईड गली, पॉइंट कव्हर, एक्स्ट्रा मिड ऑफ सर्कलमध्ये. दरम्यान राहुल फारेनकडनं. एवढी आखूड टप्पा होता. बॅकफुटला जात चेंडूला खेळलाय ते मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये, पण सरळ चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षकाकडे, त्यामुळे धाव घेण्याचा काहीच प्रयत्न नाही आहे. थोडी संयमाची भूमिका दोन्ही फलंदाजांनी. T20 फॉर्मॅट आहे. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक मार्गस्थ आहे.
यावेळी क्लासिकल हिट. व्हॉट अ शॉट दॅट इज. शॉर्ट टर्म पुल आणि पॉवरफुल ब्युटिफुल हा शॉट. दॅट्स अ बिग ब्लो. पहिला षटकार या सामन्यातला. आखूट टप्प्याचा चेंडू बरोबर रेंजमध्ये होता, रडारमध्ये होता. फलंदाजांनी तो क्षण पाहिला, ती वेळ साधली आणि परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट हा क्लासिकल ब्लो. यावेळी सरळ उडवलाय. यावेळी लॉंगअपचं क्षेत्र क्लिअर होईल का? हो, निश्चित. आणि बॅक टू बॅक हा दुसरा खणखणीत षटकार. हा चेंडू लवकर पीक केला, थोडा पुढे तर टाकलेला. फुलर लेन जागेवरूनच चेंडूच्या बरोबर मागेत बॅटच्या मधोमध घेत हा चेंडू उडवला. तो लॉंगअपच्या डोक्यावरनं षटकार नंबर 2. रुद्र 2 चेंडूंमध्ये त्याने रुद्राचा धारण केलाय. दोन्ही चेंडू चांगले त्याने पिक केले. यावेळी कट केलाय परंतु सरळ क्षेत्रक्षकडे कव्हर क्षेत्रामध्ये. पहिलं षटक आपण जर पाहिलं तर सावध पवित्रा रुद्रने या षटकामध्ये आक्रमक पवित्रा ॲग्रेसिव्ह अप्रोच जो जरुरी असतो पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये, खास करून सलामीच्या फलंदाजांकडनं. रुद्र टायमिंग आणि पॉवर याचा चांगला मिलाप पाहायला मिळालेला. दरम्यान गोलंदाज राहुल. यावेळी बॅकफुट पंच. कव्हरच्या मधून चेंडू जाईल का? गॅपमध्ये चेंडूला ठेवलाय. क्षेत्ररक्षक मागे चेंडूच्या 2 धावा निश्चित. तिसरी धावेचा प्रयत्न आहे आणि हो, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. तिसरी धाव सुद्धा सहजगत्या पूर्ण केली आहे दोन्ही फलंदाजांनी. याबरोबर षटकही पूर्ण होत आहे. थोडं महागडं षटक. एकूण धावसंख्या धावफलकावर दर्शवते ती 20 बिनबाद 20. चांगली सुरुवात म्हणावं लागेल. हे षटक चांगलंच फायद्याचं ठरलंय ते ठाणे वॉरियर क्रिकेट अकॅडमीसाठी. पहिल्या षटकात फक्त 4 धावा, या षटकात 16 धावा. एकूण धावसंख्या 20 बिनबाद 20. अशी एक चांगली सुरुवात. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. मोठी धावसंख्या धावफलकावर नक्कीच लावायची असेल, पॉवर प्लेचा चांगला उपयोग करावा लागतो. तो करताना दिसतोय खास करून रुद्र. दरम्यान कॉमेंट्री बॉक्स यांकडनं पुन्हा षटक चालू ठेवतोय इम्रान. इम्रान हक गोलंदाजीच्या मार्कवर कॉमेंट्री बॉक्स यांकडनं. आतापर्यंत जबरदस्त प्रतिभाशाली हा खेळाडू. चांगला मारा करतोय. टप्पा दिशा योग्य राखली आहे. एवढी वेल बॉल. सुंदर चेंडू. नाईस स्केल ऑफ डिलिव्हरी. मधल्या उजव्या यष्टीवर फलंदाजांनी नीट चेंडू पाहिला. रक्षात्मक सुरक्षात्मक ढंगने खेळून काढलाय पद्धतीने. बॅक टू द बॉलर. वेगही चांगला आहे. आपल्याकडे वेग असेल, नियंत्रण महत्त्वाचं, अनुशासनही महत्त्वाचं, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपली टप्पा आणि दिशा. हे महत्त्वपूर्ण अंग गोलंदाजांचं आणि ते गुण पाहायला मिळतात या षटकामध्ये. धावसंख्या 20 बिनबाद. इम्रान पुन्हा एकदा आपल्या मार्गावरून निघतोय. यावेळी व्हॉट अ शॉट दॅट इज. फक्त टायमिंग अँड प्लेसमेंटचा हा चौकार आहे. वेग जो गोलंदाजाचा आहे, फक्त टायमिंग प्लेस केलं चेंडूला कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरमधून स्वीपर कव्हरला आणि हा अप्रतिम शानदार जानदार चौकार. दरम्यान इम्रान
सुंदर फटका, नो डाऊट, दॅट्स अ क्लासिकल शॉट. जिशान यावेळी बाउन्सर, आखूट टप्प्याचा उसळी घेणारा चेंडू. कदाचित पंचांनी 1 फॉर द ओव्हर पहिला इशारा दिलाय, पण गोलंदाजांनी हा चेंडू एवढा उसळला. पहिल्या चेंडूवर चौकार आला होता, तो चेंडू थोडा पुढ्यात टाकला होता फुलर लेन. त्यावेळी जिशानने ज्या प्रकारे तो स्ट्रोक कमिट केला थ्रू द लाईन, हे खरंच प्रतिभा दिसते. दरम्यान त्याचा उत्तर छान दिलं या चेंडूने. जरा तिखट बाउन्सर ज्याला आपण म्हणतो त्या प्रकारे हा चेंडू निघाला. यावेळी शॉट फ्लिक विथ द रिस्ट, मनगडच्या जोरावर चेंडूला डावेटीच्या बाहेर थोडा चेंडू त्याचा फायदा घेतोय. पुन्हा एकदा टायमिंग अँड प्लेसमेंट, क्लासिकल शॉट, चेंडू सीमारेखा पार, चौकार. लेन थोडी डावेटीच्या बाहेर होती, लवकर चेंडूला पाहिलं, पिक केला आणि पाठवून दिलं डीप वाईड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, चौकार. आपण ती प्रतिभा पाहतोय, स्ट्रोक मेकिंग ॲबिलिटी आपण पाहतोय. दरम्यान जिशान, इम्रान पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स कडनं. यावेळी सरळ उडवलाय, मिड ऑफच्या खेळाडूच्या डोक्यावरनं लॉंग ऑफ क्षेत्र क्रॉस करतोय चेंडू आणि हा चौकार. या षटकातील तिसरा चौकार आणि याबरोबर षटकी पूर्ण झालंय. पहिल्या षटकात इम्रानच्या गोलंदाजीवर सावध पवित्रा, त्यानंतर दुसऱ्या षटकात आक्रमक पवित्रा, ॲग्रेसिव्ह अप्रोच. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक दर्शवतोय बिनबाद 33 धावा. पहिल्या षटकात 4 धावा, दुसऱ्या षटकात 16 धावा आणि या षटकामध्ये 13 धावा. असं पृथक्करण आमच्या गुणलेखिका सारिका सांगतायत. पहिल्या षटकानंतर दोन्ही फलंदाजांनी आक्रमक पवित्रा अपनावला. फारकडनं मला वाटतं गोलंदाजी ताबडतोब बदल, फर्स्ट चेंज राहुल सोलकर यांच्या जागेवर, कदाचित स्पिन आक्रमण. तीन षटकं 33 धावा, 11 धावांची सरासरी आतापर्यंत राखली आहे. नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय जो घेण्यात आला आहे, दोन्ही चालमीच्या फलंदाजांनी आतापर्यंत तो उपयुक्त ठरवला आहे. सावध पवित्रा आपण मी मागेसोड म्हणतोय, सावध पवित्रा पहिल्या षटकात होता, त्यानंतर पॉवर प्लेचा चांगला लाभ घेत आहेत. करणचा पहिला चेंडू ड्राईव्ह फोर्सिंग आहे उजव्या ऑफसाईडला, थोडं क्षेत्रक्षणामध्ये पहिल्या अटेम्पमध्ये अडखळत त्याचा फायदा उचलत आहेत. एक धाव पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. आज दिवस तिसरा आहे या स्पर्धेचा. ठाणे प्रीमियर लीग पर्व 14व. सन्माननीय नगरसेवक आणि अपॅक्स काउन्सिल मेंबर MCAचे विकासजी रेपाळे यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र राज्याचे लाडके लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्पर्धा या 14व्या वर्षात प्रवास करते. दरम्यान फॉरेनकडनं गोलंदाज करणचा हा चेंडू वेल बॉल, उजव्याशी बाहेर, जागेवरूनच कट करायचा प्रयत्न, थोडी जागा मिळाली होती पण टप्पा योग्य ठेवला होता. उजव्याने उजव्याशीच्या बाहेर कट करताना फलंदाज बीट होत आहेत, प्लेयर मिस पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडू, करण डावखुरा गोलंदाज स्पिन आक्रमण चालू ठेवतोय फॉरेनकडनं. यावेळी थोडा फ्लॅटर डिलिव्हरी, कट केला, थर्डमॅनला बीट केलाय, डीप थर्डमॅनचं क्षेत्र खाली आहे, चेंडू थांबणार नाही, निघून जाईल सीमारेखा पार, चौकार.
थोडा उशिरा खेळला हा फटका, त्यामुळे प्रवीण तांबे जे सर्कलमध्ये होते त्यांच्या बाजूने हा वेगाने चेंडू निघाला डीप थर्डमॅनच्या दिशेला 4 धावांसाठी. धावफलक सतत हलता ठेवणं ही सलामीच्या जोडीची फार मोठी कामगिरी असते. पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये ती करतानाही पाहायला मिळते आहेत दोन्ही फलंदाज. दरम्यान करण पुन्हा एकदा हा नाईस फ्रंट फुट लॉफ्टेड शॉट, स्वीपर कव्हरच्या बाजूने चेंडू निघून जातोय. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. थोडा उंची दिलेला चेंडू होता, थोडा फ्लाईट केलं होतं, त्यामुळे फलंदाजांनी तो पिक चांगला केला आणि कव्हरच्या डोक्यावरनं चेंडूला उडवलं. स्वीपर कव्हरच्या दिशेने 4 धावा. स्वीपर कव्हरचं क्षेत्र पुरं खाली आहे. 2च खेळाडू 30 दायऱ्याच्या बाहेर नियमाप्रमाणे. आपण पाहता एक खेळाडू डीप लॉंग ऑफच्या दिशेने तैनात करण्यात आला आहे, दुसरा खेळाडू डीप मिड विकेट. दरम्यान पुढील चेंडू यावेळी पॅडल स्वीप, तिथे क्षेत्ररक्षक गस्त घालतोय, पॅट्रोलिंग करतोय डीप मिड विकेटला. आरामात एक धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. 2 चौकारानंतर चांगलं तारतम्य राखलंय फलंदाजांनी. एक धाव घेऊन स्ट्राईक बदललाय, रोटेट ठेवतायत, रोटेट करतात स्ट्राईक. करणचा हा चेंडू क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह. हो व्हाट अ शॉट, ब्रिलियंट, मार्बलस, एक्सेलंट कव्हर ड्राईव्ह. कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून का प्लेस केला या स्ट्रोकला. 4 धावांनी हे षटकी पूर्ण होते. धावसंख्या 47, 47 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओव्हर, 47 विदाउट लॉस. आतापर्यंत 4 षटकांची ही जी कहाणी स्कोरबोर्डची जुबानी आपण पाहताय, फार जबरदस्त हा स्ट्रोक होता. धावसंख्या 47, 5वं षटक मार्गस्थ होत आहे. सेकंड लास्ट ओव्हर ऑफ द पॉवर प्ले. बदल हवा कारण ब्रेक थ्रू हवा. गोलंदाजीत बदल हवाच कारण ब्रेक थ्रू फार कंपल्सरी आहे. आणि स्वतः प्रवीण तांबे ज्या नावाची ओळख क्रिकेट जगताला आहे, स्वतः प्रवीण तांबे यांनी चेंडू हातात घेतलाय. संघाला गरज आहे ती पहिल्या ब्रेक थ्रूची. पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये आपण 1-2 गडी बाद केले, धावा जरी आल्या तरी ते चांगलंच म्हटलं जातं, कारण त्यानंतर आक्रमक पवित्रा पाहायला मिळतो आपण या फास्ट ताबडतोब क्रिकेटमध्ये. T20 फॉर्मॅटमध्ये फार जबरदस्त आयोजन नियोजन असलेली स्पर्धा. ठाण्याच्या क्रिकेटपटूंसाठी तर ही संजीवनी आहे. आपली प्रतिभा, कौशल्य, टॅलेंट दाखवण्याचं एक मोठं व्यासपीठ या निमित्ताने माननीय विकासजी रेपाळे साहेब यांनी उपलब्ध करून दिले. हे सातत्य त्यांनी ठेवलं, कारण 13 वर्ष हा सातत्य प्रयत्न केला गेला आणि त्याचं फळ आपल्याला पाहायलाही मिळतं. अनेक क्रिकेटपटूंनी आज मुंबई रणजी संघामध्ये इथून प्रवेश मिळवला सुद्धा आहे. दरम्यान प्रवीण तांबे यांचा पहिला चेंडू. हा जागेवरून चेंडूला फोर्सिंग ड्राईव्ह ऑफसाईडला. परत एकदा थोडीशी चूक, पहिला क्षेत्ररक्षण करताना चेंडू अडवताना. एक धाव पूर्ण केली वेगाने. दोन्ही फलंदाजांचं अंडरस्टँडिंग, आपसी तालमेल फार सुंदर. दरम्यान पुढील चेंडू. हो वेल बॉल्ड. चेंडू टप्पा पडतोय, सरळ राहतोय, फलंदाज कट करताना बीट होतोय. चेंडू खाली राहिला थोडा. निर्धाव चेंडू. यावेळी लेग साईडला हलकासा खेळून काढलाय. मिडावांचा क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत येईपर्यंत एकदा आरामात पूर्ण केली आहे. धावसंख्या 49, बिनबाद 49. गोलंदाज आपल्या मार्कवर. यावेळी हा हवेत होता आणि इथे जर जबरदस्त प्रयत्न केला असता तर हा जेल कंप्लीट केला गेला असता. पुल करताना चेंडू उशिरा आला आणि फलंदाज पहिले स्ट्रोक करून मोकळा झाला होता.
त्यामुळे हा स्ट्रोकच कंप्लीट होऊ शकत नव्हता. एक चांगली संधी होती. ओ डिलिव्हरी, हा काही कळलंच नाहीये. चेंडू टप्पा पडलाय, वेगाने निघाला आणि याबरोबर 50 धावा पूर्ण, 50 कंप्लीट. धावांचं अर्धशतक धावफलकावर लागले. पण या षटकामध्ये कहाणी काही वेगळीच. प्रवीण तांबे यांचा अनुभव काय आहे ते या षटकात दिसतंय. यावेळी बॅकफुटला खेळून काढलाय चेंडू पॉइंटच्या दिशेला आणि अप्रतिम षटक इथे समाप्त होतंय. 5 षटकांचा खेळ इथे पूर्ण. धावसंख्या धावफलकावर 50 धावा, बिनबाद 50. आतापर्यंत 10 धावांची सरासरी राखली आहे. आता शेवटचं षटक पॉवर प्लेचं मार्गस्थ होईल. फार इनकडनं कोणाला गोलंदाजी दिली जाईल हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. कदाचित करण हा जो डावखुरा स्पिन आक्रमक गोलंदाज आहे त्यालाच कदाचित पुढे सुरू ठेवतील, कंटिन्यू करतील. पाहूया आता काय या षटकाची कहाणी. प्रवीण तांबे असा लेजेंडरी प्लेअरचा अनुभव आणि त्यांची इथली उपस्थिती मैदानावरची इतर खेळाडूंसाठी फार महत्त्वाची आहे. बेनेटॉन क्रिकेट क्लबचं 6वं षटक. हो, पॅडल शॉट, चांगला कनेक्शन आहे पण डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आला. एकच धाव मिळेल. करण सुद्धा चांगला टप्पा आणि दिशावर गोलंदाजी करताना दिसतोय. यावेळी गॅपमध्ये चेंडू ठेवला. टायमिंग अँड प्लेसमेंटचा हा सुंदर मिलाप पाहायला मिळाला. चेंडू तेवढा खराब नव्हताच, परंतु जो प्रकारे हा स्ट्रोक खेळला गेला, जागेवरूनच थोडा स्क्वेअर कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हरमधून पुन्हा चेंडू निघून जातोय स्वीपर कव्हरला चौकारासाठी. कलात्मक फटका ज्याला आपण म्हणू शकतो. प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक करण फॉरेनकडनं. यावेळी बॅकफुट पंच, स्ट्रोक विथ द रन, अनुमानिक धाव पूर्ण केली आहे. दोन्ही फलंदाजांचं सातत्य धावांचं चांगलं राखलं. दोघांनी चांगल्या चेंडूला सन्मानही दिलाय, खराब चेंडूचा समाचारही घेतलाय आणि शैलीदार फटके पाहायला मिळाले. यावेळी टोटल बीट, वेग वाढवला, टप्पा पडला, चेंडू हलकासा वळला सुद्धा आणि फलंदाज ऑन द राईज खेळायला गेलेला हा फटका. बॅट अँड बॉलचा काही संपर्क नाही आहे. निर्धाव चेंडू. यावेळी मिड ऑफच्या दिशेला दोन्ही फलंदाजांचं जे अंडरस्टँडिंग आहे, तालमेल फार सुंदर आहे. एक एक धावेने धावफलक हलताही ठेवतायत. पॉवर प्लेचं शेवटचं षटक कशा प्रकारे हे हँडल केलं जाते ते महत्त्वाचं. दरम्यान करण फॉरेनकडनं. यावेळी लॉंग ऑनच्या दिशेला कोणच नाही आहे, तिकडे जाऊन चेंडू घेऊन यावं लागेल. चेंडू जातोय सीमारेखा पार आणि या षटकाची सांगता चौकाराने. 6 षटकांचा पॉवर प्लेचा कोटा समाप्त. 61 धावा, 61 विदाउट लॉस, म्हणजे आतापर्यंत 10 धावांची सरासरी राखण्यात यश आलंय ठाणे वॉरियर क्रिकेट अकॅडमीच्या सालामीच्या जोडीला. 61 विदाउट विकेट. पाहूया काय घडेल, काय बिघडेल. पॉवर प्लेच्या नंतर ब्रेक थ्रू मिळवण्यात यश येईल का बेनेटॉन क्रिकेट क्लबच्या संघाला. पाहूया काय घडेल बिघडेल. तो फिर सुनते अगली इनिंग की कहानी. आनंद श्रेष्ठ इनकी जुबानी. ओ टू आनंद.
Thank you, sir. Good morning to everyone. The third day of the 14th season of Thane Premier League, famously known as Upamukhyamantri Chashak, and what a match we are having this time round about Thane Warrior Cricket Academy winning the toss, electing to bat first versus Benetton Cricket Club. The man in action, Praveen Tambe. Loopy delivery, should have tried, not happy with that attempt from the fielder at the long off region. There was a chance there, it was up in the air, a diving effort, a good start, while at the ball of run up would have been a different story. Good batting this from both the batsmen. Rudra on strike, once again played down the ground, this time one bounce over the ropes. Nice hit, straight out the middle of the bat, once again a boundary. Score moves on to 66 without losing any wicket. A terrific start this, maintaining the momentum, those two batters, 10.42 runs per over the current run rate. The projected score, 208. Tossed off delivery, nicely played once again. Back to the bowler, down the ground, this time down to the long on region. Back-to-back boundaries. There is some turn on offer on this turf. The first over of Pramit Tambe was really well, mixing up with lengths. Both those deliveries have been quite a little bit fuller. Just bringing the long on a little bit wider. Flattered this delivery. Just outside the off, some nicely cut it, and that will be a high trick of boundaries. Brilliant batting on display from Rudra. 45 of just 21 deliveries. The momentum continues, 74 without losing any wicket. The non-striker, and it's Dishant Shah, 29 of 19. Good partnership this. 45 of 21 deliveries. Both the days we have some half century and a century. Tossed up delivery, nicely played this time. Down to the cow corner region, there is a chase on from the fielder, and that's the fourth boundary in a row. Turning out to be an expensive over this time. The score line of this over reads 1-4-4-4-4. Four boundaries in a row. Brilliant batting this. Moves on to 49. Rudra. Nicely played, punched off the back foot down to the mid-off region. Away they go for a quick single, direct hit at the non-striker end. Would have been really close to see. But couple of runs, that would be a half century on the third day itself. Rudra Dhande, 51 of just 23 deliveries. Really good batting this. Rudra showing his Rudra avatar. Really good with the bat today. This early morning, 7 overs done, 80 runs on the board. Talking about the batsmanship which we have encountered on those days. This is the third day. Suved Parker, he made 55 on the first day. Sairaj Patil. Suved made his half century in 28 deliveries, to be precise. Starting a new over. Good drive down the ground, down to the long off region. Sairaj Patil, on the first day itself, made his half century in 30 deliveries. After that, Siddharth Matre, 62 of 31. This time played up in the air. There is a fielder out there at the long on region, but just watching the ball sail over his head. That's a maximum once again. Brilliant hit.
Coming into the attack, Sachin. Single of the first delivery and then a huge six down to the long on region. Rudra batting on 57 of 24 deliveries. This time once again going down the ground, down to the long on region. Good fielding this time, just a single. Siddharth Matre completed his half century in 25 deliveries. Then Om Kesh Kamath. Nicely played down the ground, once again down to the long gone region. Just a single though. This time nicely bowled on a flatter trajectory, misfielded by the bowler himself. Just didn't get down at the right time. Nevertheless, just a single. 90 on the board. Just last delivery left in the 8th over. Good comeback by the bowler after that huge six. This time nicely bowled. Just angling in a little bit, takes the lower part of the bat, goes down to the fine leg region. Good fielding this from Rahul Solkar down to the short fine leg region. Hits the wicket at the striker end. That's the end of the 8th over. 91 without losing any wicket. Yesterday also we saw both the opening pair. We had a brilliant partnership on the ground of somewhere between 135. That was the highest opening pair up till now in this season. This is the 14th season. What a platform this has been. Yesterday being the auction day in Mumbai T20 League. Would like to congratulate Shashikant Kadam to once again being selected, retained by Eagle Thane Strikers. More and more players have gone. We'll get you the news in a short while. But till then, what a platform this has been. Those 14 years, the main anchor of this ship has been respected Mr. Vikasji Repale sir, corporator and Apex Council member of Mumbai Cricket Association, under the guidance of Deputy Chief Minister, respected Eknathji Shinde sir. What a match we are encountering. 8 overs done, 91 on the board, coming on to bowl from the Combox end. Karan once again to continue, this time from the Combox end. Couple of runs being added to the total, 93 on the board. Going along nicely, those two batters. Karan bowled a couple of overs from the opposition end, this time from the Combox end. Flatter delivery once again played down to the long off region. Just a single. Karan Patel. 2.2 overs, none for 28. The current run rate 11.28. The projected score 225. Nicely played this time. Down to the cover region. Nicely fielded by the fielder there. Good decision by the batsman not to go for that run. 8.3 overs done. Just a little bit slower up in the air, just up above the fielder at the backward point region. About this time nicely played. Throw is coming at the striker end. Has been some sloppy work in the field. There has been some chances which should have been taken. Great attempt on another day would have had those wickets. But 99 on the board without losing any wicket. That's a great start for the batting side.
This time a good scoop shot, but straight in the hand, should have been taken once again. Spilled out at the last moment. Throw is coming at the striker end. Couple of runs taken, 101 on the board at the end of the 9th over. Good start this. Solid foundation laid by those two batters. Nicely bowled. This time, once again opened the face of the bat. Just played down to the short third man region. Praveen Tambe, the man in action. Debuted in IPL at the age of 41. What a role model he has been all those years. Nicely cut it down to the extra cover region. Just a single. 104 on the board. 9.3 overs done. Dishant Shah on strike. 38 of 26. Going down the track. Played handsomely down the ground. Good fielding this time from the long on fielder. Just a single. Moves on to 39 of 27. Rudra Dhande batting on 66 of 31 deliveries. Strike rate more than 200. Short of length delivery. Nicely cut it down to the extra cover region. There is a fielder out there. Good fielding. Throw is coming at the striker end. Quite easily that second run was taken. Good positive running. Good communication between the batters. 107 on the board. Last delivery of the 10th over. Need to make a comeback, the bowling side. Just a little bit tossed off delivery, played nicely down the ground, down to the long off region. Good attempt by the fielder, but couldn't stop that. For rolling over for a boundary, 111 on the board.
Yogesh Pawar. Slower one to start with. This is up in the air. Oh, just above the fielder. That's what I was saying. Just the fielder needs to be quite active. They are taking the start right from the 30-yard circle, closing in. Just need to be very close to the 30-yard circle. I believe couple of chances have gone down begging. The first ball itself, there was a chance created. 113 on the board. Dishant Shah, 41 of 28. Slower once again. This is picked up nicely. This is up in the air. Mid-wicket fielder getting underneath, and that's the wicket they wanted. Dishant Shah will have to go back in the dugout. Lapse of concentration. And after that short drinks break, wicket goes down at the score of 113. Getting the first wicket. Great start this. Now just need to reconsolidate the new batsman and the coming middle order batsman as well. Good delivery this once again. Just a slower one just outside the off stump, pushed nicely down to the long off region. Just a single, opens his account with that single. Anirudh. Rudra Dhande batting on 72 of 33 deliveries. Yesterday we saw the first century of this edition. Anish Chaudhary, 100 of just 34 deliveries. This time nicely played, just a flick of the wrist down to the right hand side of the long on fielder. Good fielding this, just attacked that delivery. Just gave any chance to the batsman for going or thinking about the second run there. This has been a good over after the drinks break. Just 4 runs scored in this over of 4 deliveries and a crucial wicket as well. 2 deliveries to go in the 11th over. 115 on the board. Once again a slower one. Off cutter, I must say. Pushed it nicely down to the cover region. Dot delivery. Last delivery to go, 115 on the board. This time nicely cut it between the gap. Just on the right hand side of back 1 point fielder. It was until then looking like a very, very good over. Ends the over with a boundary.
Definitely, the Benetton Cricket Club would like to crawl back in this match. Thane Warrior Cricket Academy won the toss, electing to bat first. Sachin to continue. Good delivery. This just angling in with the turn. Nicely defended by the batsman as well. Back to the bowler. Rudra Dhande, 73 of 35. Tossed off delivery. Couple of steps down the track. Played nicely down the ground. Just a single. The left-hander coming on strike. Anirudh Nair has just come in. 5 of 3 deliveries. Good end to the previous over with a boundary down to the sweeper backward point region. 120 on the board. Just taking guard. Once again, Anirudh Nair. th season of Thane Premier League. Live from Dadoji Kondev Stadium. Flatter on this time, just outside the off stump, cut in nicely to the backward point fielder. Good fielding. Just a pick up on one hand and the throw down to the bowler's end. Just a little bit of headache for the fielding captain. Changing the field, left hand and right hand combination. This time flicked it nicely down to the deep square leg region. Couple of bounces over the ropes. Good hit that one. Once again from Rudra Dhande. Moves on to 78 of 37. 125 on the board. Goes down the track, played it handsomely down the ground. That's a maximum. Really good hit from Rudra Dhande. Moves on to the 80s. .131 on the board with that huge hit down the ground, down to the long off region. Last delivery of the 12th over. Once again, a couple of steps down the pitch. This time, nicely bowled, angled in by the bowler. Good comeback. Straight down to the long on region just for a single at the end of the 12th over. 132 on the board. Moving along nicely the score line. Just has kept the momentum. Just as we see, today is the third day, Super Sunday. Live from Dadoji Kondev Stadium, Thane. This is the 14th season. And the main anchor of the ship has always been respected Mr. Vikas Jirepale sir, a corporator and an Apex Council member of Mumbai Cricket Association. This has always been under the guidance of Deputy Chief Minister, respected Shri Eknathji Shinde sir. Day before yesterday, we had a grand opening and we had our Deputy Chief Minister, Eknathji Shinde sir, along with us in the opening ceremony. What a grand occasion it was. Coming on to bowl, Yogesh Pawar. Nicely bowled this time, just leaving the batter. Brilliant delivery. Out of those 7 deliveries which he has bowled up till now, this must be the fastest. In the previous over, 6 slower one, this was really good. Outside the off-stump channel. Slower one once again. Waited for that delivery. Played it nicely down to the cow corner region. There is a protection out there. Good fielding though.
Just a single. Really brilliant from the fielder this time. Was stationed at the mid-wicket region, ran couple of yards and good fielding. 133 on the board. 4 deliveries to go. In the 13th over, still 7 overs left after this over. Yogesh Pawar just getting his field right direction. Anirudh on strike. This one was a little bit off cutter. Was quite slower one. Nicely placed along the gap between the cover region and the mid-off. Just a single. The officials for the day, Samir Dhirwani sir and Sagar Mule. Sir, scorer being Sarika Indap along with us, scorer statistician, and our physiotherapist Dr. Khyati Sahni. Good morning to all the viewers who are watching us live on CricLive.in. This time once again a loopy delivery. Slower one, 135 on the board. Rudra Dhande with that single moves on to 87 of 42. The only centurion up till now being Anish Chaudhary. 2 deliveries to go in the 13th over. What a knock it was from Anish Chaudhary, and what a moment it was yesterday being the auction day of Mumbai T20 League. Once again a slower one, this time played just on the right hand side, just away from the bowler. Just a quick single down to the mid-off region. Score moves on to 136 for 1. Last delivery of the 13th over. Call it a batsman's paradise, but yesterday Wasim Ashraf took 3 wickets. This time once again a bad delivery to end the over. It was just going down the leg side, a full toss, helped it nicely for a boundary at the end of the 13th over. 140 on the board. Just as the previous over of Yogesh Pawar, a short delivery, cut it by Anirudh for a boundary. Just now in this over, a full toss, just spraying down the leg side, nicely helped by the batsman, and away she goes for a boundary. At the end of the 13th over, it's 140 on the board. Lineup, and there would be change in the com box. We'll have the voice of Thane, our own legend, Pradeep Desai. Bunty sir, over to you on the mic. थैंक यू आनंद. चलते हैं मैच की ओर. 14 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ. 140 रन यानी 10 रन प्रति ओवर के माध्यम से रन बनाने में कामयाब हुई है ठाणे वॉरियर्स क्रिकेट एकेडमी की टीम. प्रवीण तांबे, इनकी पहली गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को पहले टॉस किया था. बल्लेबाज पैडल स्लॉग इट करने के प्रयास में कंप्लीट बीट होते हुए. 13 ओवर माफ कीजिए. चौदह ओवर की यह शुरुआत. थोड़ी हाफ ट्रैकर गेंद को जल्दी परख लिया था, पुल किया था, बल्ले के बीचों बीच लेकर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, पेट्रोलिंग करते हुए नजर भी आए. डीप स्क्वायर के रीजन पर 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर जरूर. 14 ओवर जारी है इस मैच का. अभी तक दोनों बल्लेबाजों ने
राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन जो मैदान के बीच में है, दाएं बाएं हाथ के बल्लेबाज दोनों अच्छी तरीके से गेंद को आगे लेकर जाते हुए ठाणे वॉरियर्स क्रिकेट एकेडमी के लिए प्रवीण तांबे फार एंड से। ये फुल टॉस बनाकर गेंद को तब्दील किया और काफी लंबा ये हिट है, डीप लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से गेंद निकलती हुई दर्शक दीर्घा में 6 रन की। नाइन्टी 97 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 97 रन पर। ये अच्छा शॉट, क्या ये चौका देकर जाएगा? और इसी के साथ ये 100 रन पूरे, द ग्रेटेस्ट सेंचुरी रुद्र के बल्ले से। ये दूसरी सेंचुरी इस प्रतियोगिता की। बहुत ही बढ़िया अपने इनिंग को आगे लेकर गए, संयम और आक्रमण की भूमिका देखने भी मिली। रुद्र दांडे, काफी बढ़िया इनिंग ये। कितने गेंदों में ये शतक पूरा किया है देखते हैं। 45 गेंदों में ये शतक इन्होंने अपना पूरा किया, सेंचुरी। जब ये दूसरी सेंचुरी इस टूर्नामेंट की। 36 गेंदों में 103 रन की इनिंग भी देखने मिली थी हमें। आणि चौधरी के बल्ले से इस बार अच्छी गेंद, अपना अनुभव यहां पर झोंकते हुए प्रवीण तांबे इस बार फ्लाइट किया और गेंद को जड़ में भी डाला था। आखिरी वक्त पर अपने स्ट्रोक को चेक करना पड़ा रुद्र को। काफी जबरदस्त इनिंग, सलामी जोड़ी के रूप में आए थे, तभी से उन्होंने अपने कदम जमाए विकेट के ऊपर। प्रवीण फिर एक बार, इस बार ये स्लॉग हिट, क्या ये रोक पाएंगे? नहीं, काफी पावर के साथ स्ट्रोक को खेला गया था। बहुत बढ़िया टाइमिंग, पावर का ये मिश्रण था। खिलाड़ी ने काफी प्रयास किया क्षेत्र रक्षक ने, लेकिन उनको छकाती हुई गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन पार। रन 14 ओवर के पश्चात 156 फॉर 1, 156 पर 1। अब दोनों बल्लेबाजों को मालूम है कि मैच की अहमियत क्या है। बची 6 ओवर में ये कम से कम 250 के लगभग स्कोर को लेकर जाना चाहेंगे। बड़ा लक्ष्य देने का प्रयास करेंगे, बड़ा टारगेट देने का प्रयास करेंगे। दोनों बल्लेबाज सेट है। रुद्र ने अपनी सेंचुरी यहां पर मुकम्मल की और लेफ्ट हैंडर बैटर अनिरुद्ध ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। फार एंड पर खड़े हैं, रुद्र सामना करेंगे। योगेश पवार की पहली गेंद, क्या पुल किया है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे या आसान सा मौका गवा दिया। इनको हिलने की भी जरूरत नहीं थी, गोदी में आकर गिरने वाली थी, लेकिन आइन वक्त पर नजरें हटी और ये कैच छूटा। काफी ये मौका बनाया था योगेश ने, महाराष्ट्र रणजी टीम से खेलते हैं, अनुभव जबरदस्त है इनके पास। पहली विकेट इन्होंने चटकाई है, ब्रेक थ्रू दिलवाया है। फिर एक बार विकेट करना चाहते थे, ब्लॉक होल में गेंद डालने की कोशिश, अंदरूनी सरा लगा, खिलाड़ी गेंद के पीछे काफी तेजी के साथ निकलते हुए, लेकिन गेंद उनको बीट करती हुई 22 का चौका। ये समीर जिरवानी जो मुख्य अंपायर की भूमिका में आपको दिख रहे हैं, इनका इशारा आता हुआ ये अतिरिक्त रन जोड़े जाएंगे, 4 रन। काफी वेरिएशन लाते हैं योगेश पवार, गेंद की गति को कम करते हैं, अपना अनुभव झोंकते हुए पूरे योगेश अपने टीम के लिए, बेनेटॉन क्रिकेट क्लब के लिए। लेकिन
खिलाड़ियों क्षेत्ररक्षक का इतना सहयोग नहीं मिला है उनको। स्लोरवन जल्दी पढ़ लिया था, रीड किया था, बैकफुट में गए, कट किया, स्वीपर कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर, एक दूसरे का मिलेगा साथ तभी बनती है अपनी बात, लेकिन क्षेत्रों जो फील्डर है इनका साथ उतना नहीं मिला है गेंदबाजों को, नहीं तो अब ये कहानी कुछ अलग बयां करती हुई नजर आती है यहाँ पर। राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन, बाएं दाएं हाथ की है जोड़ी, कमाल का प्रदर्शन करती हुई ठाणे वॉरियर क्रिकेट एकेडमी के लिए। अब अराउंड द विकेट योगेश पवार अपने बॉलिंग मार्क पर। ये बिग हिट करना चाहते थे, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। योगेश पवार जानते थे बल्लेबाज क्या मूड में है, जानबूझ के गेंद को थोड़ा हल्का डाला। स्लोअर वन, गति परिवर्तन देखने भी मिला। बल्लेबाज विकेट करना चाहते थे, पूरी तरह से बीट होते हुए स्विंग एंड मिस भी देखने मिला। प्रवीण तांबे सर, योगेश पवार, दो बढ़िया खिलाड़ी। इस बार गेंद को थोड़ा खींचा था लाइन को, बल्लेबाज बैकफुट पे गए, खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, चहलकदमी करते हुए एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। जो ज्यादा परेशानी का माहौल नहीं है बल्लेबाजों के लिए, जबकि 15 ओवर जारी है इस मैच का। काफी रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 166 ऑन द बोर्ड। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जगह मिली थी, खेल दिया था तेजी के साथ रन के लिए थोड़ी, और ये काफी वाइड थ्रो था, डालना था कहाँ, गेंद गई कहाँ, लेकिन बैकअप है। एक रन के साथ 15 ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ 167 रन, एक विकेट पर। काफी मजबूत स्थिति में है ये टीम ठाणे वॉरियर क्रिकेट एकेडमी की। अब आने वाली 5 ओवर में ये किस ढंग से इस मैच को आगे लेके जाते हैं। दोनों बल्लेबाज जरूर अब अपने बल्लेबाजी का गियर को बदलेंगे। अब किस ढंग से बेनेटन क्रिकेट क्लब की टीम ये बहाव को रोकती है, ये भी देखना उचित होगा। T20 फॉर्मेट में आखिरी जो स्लॉग ओवर होते हैं, यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखी भी जाती है। जब आपके पास विकेट इन हैंड हो तो फिर एडवांटेज आपको है, ये तो तय है। आपको अब यहाँ से बड़े हिट तो करनी है, आपको लाइसेंस भी मिला है। काफी लंबी कतार है, कौस्तुभ पवार भी डगआउट में इंतजार कर रहे हैं। ये भी मुंबई रणजी टीम से खेले हुए एक बेहतरीन खिलाड़ी कौस्तुभ पवार। इसी मैदान पर जब ये सीजन शुरू हुआ था, यानी ठाणे प्रीमियर लीग, तब काफी बढ़िया शतक इनके बल्ले से देखे भी गए हैं। चलिए मैच की ओर चलते हैं। फार एंड से गेंदबाजी में स्पिन आक्रमण करण के रूप में, यह अच्छा फ्लरिश ड्राइव था कवर क्षेत्र में, घुटना टेक कर ये गेंद को लीन ऑन द बॉल एंड ड्राइव टू द कवर रीजन, लेकिन स्ट्रेट टुवर्ड द फील्डर। इसे कहते गुड शॉट फॉर नथिंग। इस बार देखिए बिना पैरों के हलचल किए बिग हिट करना चाहते थे, जगह से गेंद को उड़ाना चाहते थे, लेकिन करण बार बार टप्पा को बदल रहे। काफी अच्छी तरीके से दोनों गेंदें डाली उन्होंने। अगली गेंद, ये तेज परिवर्तन के तौर पर तेज गेंद को छोड़ा इन्होंने। बल्लेबाज पहले स्ट्रोक के लिए कमिट हो गए थे। रुद्र इंप्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। इस बार ये पुल किया, टाइमिंग देखिए क्या भरपूर है, खड़े खड़े अंजाम दिया इन्होंने, ताकत भरपूर लगाई नहीं तो टाइमिंग बेहतरीन। 4 रन के लिए गेंद से हमारे कपाल। यह हवा में है और यह बेहतरीन कैच, व्हाट अ कैच दैट इज, वेल जज कैच। हवा में गेंद को अंजाम दिया था, जगह से गेंद को उड़ा दिया था लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, और काफी अच्छा वेल जज
और टाइमली जंप करके लिया हुआ कैच था। विकेट नंबर 2 डगआउट की ओर लौटता हुआ रुद्र के रूप में। बहुत बेहतरीन इनिंग रुद्र की, काफी जबरदस्त इनिंग यहां पर समाप्त हुई। तेज गति के साथ रन बनाने के बहाने ये स्ट्रोक खेल बैठे, लेकिन जब वो डगआउट लौटेंगे तालियों के साथ उनका स्वागत होगा। द सेकेंड सेंचुरियन ऑफ दिस टीपीएल सीजन 14। दूल्हे दांडे की ये जो इनिंग थी 112 रन की 55 गेंदों में, आप कितनी गेंद लेते हैं इसको भी तो महत्व नहीं है भाई, क्योंकि आप जब शुरुआती दौर में बल्लेबाजी करने आते हैं ओपनिंग पेयर में, तब आपको नई गेंद का सामना करना पड़ता है। गेंद घूमती है, गेंदबाज जो काफी तेज गति से गेंद डालने वाले आपको मिलेंगे, मीडियम पेस, और उसके साथ अगर आप समझ कर खेले, आपको 20 ओवर तक का सफर तय करना है, आखिरी वक्त तक डटे रहेंगे। कौस्तुभ पवार उसका बेहतरीन उदाहरण है। जब भी वो खेलते हैं पेशेंस के साथ खेलते हैं। अब देखते हैं किसको बुलाया भेजा गया है। शाश्वत पाठक जो इस टीम के कर्ता धर्ता सरपंच है, कैप्टन है, मैदान की ओर कदम बढ़ाते हुए स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे। और अच्छी गेंदबाजी का नतीजा परिणाम मिला है, फल मिला है करण को, जो फॉरेन से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ये गेंद टप्पा खाया और काफी टर्न हुई और उठी भी। टप्पा खाने के बाद ये गेंद उठी भी। आखिरी वक्त गेंद को देखा, खेलने का कोई प्रयास नहीं किया। एक सफल ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई करण की। अब स्कोर है 171 रन, 2 विकेट पर 16 ओवर के समाप्ति के बाद। अब ये मैच किस ढंग से आगे जा रही है, क्योंकि देखना पड़ेगा आने वाली 4 ओवर में अब बल्लेबाज क्या रुख अपनाते हैं। क्या 225 230 के पार या 250 के लगभग स्कोर को लेके जाएंगे, यही उनकी मनीषा भी होगी। काफी ह्यूमिड उष्ण वातावरण है और खिलाड़ियों के पूरे जोर दमखम लगाना पड़ता है। प्रवीण तांबे जैसा लेजेंडरी क्रिकेटर यहां पर है। मेहनत परिश्रम का उत्तम उदाहरण है, और सफलता जो होती है मेहनत की दीवानी होती है, ये उनको देखकर ही पता चलता है। क्या जबरदस्त खिलाड़ी योगेश पवार, प्रवीण तांबे, कौस्तुभ पवार, ऐसे लेजेंडरी खिलाड़ी जब आपके साथ खेलते नजर आएंगे तो नया जो उभरती जो प्रतिभा होती है उनको काफी अनुभव मिलता है। यहां से उनके साथ खेलने का ये एक्सपीरियंस काफी कुछ देके जाता है। इस बार जगह से गेंद को टाइमिंग देखिए, इसका क्या शॉट था, ये जल्दी लाइन और लेन को पढ़ लिया था और बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को खेल दिया था ओवर द बॉलर स्ट्रेट बाउंड्री। काफी बढ़िया प्लेयर है योगेश पवार। अपने टीम के लिए किस ढंग से समर्पण करना चाहिए, किस ढंग से गेम को आगे लेकर जाना चाहिए, उसका बेहतरीन उदाहरण योगेश पवार अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स स्टैंड के सामने से। ये स्लोअर वन जल्दी रीड किया, लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन है लेग साइड में, डीप मिड विकेट क्षेत्र में। फ्लरिश ड्राइव प्लेस नहीं कर पाए, खुद पे नाराज है। फुल टॉस जिसको कहते हैं जूसी डिलीवरी, उसका फायदा नहीं उठा पाए। दोनों अच्छे बल्लेबाज है जो अब स्ट्राइक मैदान के ऊपर डटे हुए हैं। इस बार ये अच्छी गेंद, टप्पा खाया, गेंद अंदर भी आई। आखिरी वक्त में गेंद को रीड किया और पुश किया, हल्का सा पुश, सिंगल के लिए पुश करो, खुश रहो। 1 रन के साथ स्कोर है 177 रन।
17 ओवर जारी इस इनिंग का। राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन, दाएं बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के ऊपर। एक के रन के साथ स्कोर को आगे लेकर जाते हुए नजर आ रहे दोनों बल्लेबाज। स्कोर को हिलाते रहना चाहिए, घड़ी की टिक टिक और स्कोर की टिक टिक, ये दोनों हमेशा टिक टिक करते रहना चाहिए। डॉट डिलीवरी आएगी तो प्रेशर अपने आप ही खुद पर आ जाता है। चलते हैं योगेश पवार फिर एक बार, इस बार गेंद को उड़ा दिया है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी उस मौके का इंतजार करते हुए आसानी को कैच कंप्लीट करते हुए विकेट का पतन। और तीसरे विकेट का यहां पर खात्मा होता हुआ 3 विकेट। अब ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आप करेंगे विकेट के लिए तो कोई मिस स्ट्रोक भी आपको चांस देकर जाएगा, और यही रणनीति होती है T20 फॉर्मेट में। ये फास्ट फॉर्मेट है। योगेश पवार को दूसरी सफलता मिलती हुई। आप अच्छी लाइन और लेन में डालेंगे ना तो आपको फल मिलता है विकेट के रूप में। स्टंप के अंदर गेंद को फिनिश करो, लाइन और लेन पकड़कर गेंदबाजी करो। ये अच्छी गेंद, लेकिन बैकफुट पे खेल दिया था, अच्छी तरह से रोका वहां पर क्षेत्र रक्षण काफी उम्दा। 1 रन मिलेगा और सफल ओवर की समाप्ति। 17 ओवर के समाप्ति के बाद 179 रन, 3 विकेट के नुकसान पर बची 3 ओवर में 18 गेंदों में। क्या ये स्कोर 230 या उसके ऊपर जाएगा, यही देखना अब मुनासिब है। आइए चलते हैं अब आगे 3 ओवर की कहानी जरा इंग्लिश कमेंटर हमारे आनंद श्रेष्ठ की जुबानी। Thank you, Bunty sir. It was a great start, and really they have consolidated after that. At the end of the 17th over, 179 for the loss of 3 wickets. Yesterday, that was a big day, the auction day of Mumbai T20 League. And many congratulations to Shashikant Kadam for getting selected and retained once again on Thane Eagle Strikers. Coming into the attack once again, Imran Haq, 2 overs prior to this, none for 17. On strike, it will be Kostu Pawar. Short of Lendy, trying to pull it, didn't get out. A sweet part of the bat goes down to the mid-wicket region. A quick single, just a single. Kostu Pawar, the player himself who has scored 3 centuries in this event. Thane Premier League, this is the 14th season. He has been playing for quite a long while. 3 centuries under his name. And definitely, yesterday, as I said, it was the big day for all the players. Mumbai T20 League auction.
So those players were selected: Shashikant Kadam, Suved Parkar, Atharva Ankulekar had a great day yesterday with the ball, 3 wickets and a half century. Definitely Anish Chaudhary was also selected, the first centurion in this edition. A wide ball being signaled by the umpire. Just with that one extra run, 181 on the board. 17.1 overs done. Anirudh Nair on strike. 20 of 14 deliveries at the non-striker end. Kaustup Pawar. He has just come in. Couple of deliveries, couple of runs under his name. This time slashes it hard, but down the ground, down to the long on region. Just a single. Good over this has been up till now. Imran Haq had a good spell earlier as well. Just 17 runs of 2 overs. Bowls with quite a lot of heart. Bowls with good rhythm. A nice run-up action. 20 to 25 step run-up. Going right arm over the wicket. Kaustup Pawar on strike. Goes down the track. Played nicely. Down the ground. Down to the long on region. Just a single. Trying to up the ante. He is known for that. Kaustup Pawar. Trying to bludgeon that delivery. But good delivery once again from Imran. Keeping it tighter. Not giving anything loose up till now. In this over. The current run rate 10.46. Hasn't slowed down this inning. Been really good batting from the batting side. This time making some room. Wanted to play down to the extra cover region, but a sloppy work by the fielder at the long off region. Just allowed that ball to roll over for a boundary. 187 on the board. Just was a single there, but right after the meat of the bat, it was hit ferociously down to the long off region. Moves on to 25. Anirudh Nair of just 16 deliveries. Couple of deliveries left in the 18th over. Once again taking guard, Anirudh. Short of length delivery, trying to pull it. Played down to the long on region. There is a fielder there and wicket goes down. Quite ecstatic, the bowler. Good bowling from Imran. Not giving that much room. Played away from the body and Anirudh will have to go back in the dugout. Seven for 4. First success for Imran Haq. Good catch down to the long on region. New batsman coming in. Ayush Budania. Shot of length delivery. That was a good shot. A stunner. Nice pull down to the deep square leg region for a maximum.
Kaustup Pawar on strike, and from the commentary box end, the last over of his spell, Praveen Tambe once again to continue right arm over the wicket. This time flighted delivery and down the ground, down to the long on region for a maximum. Starts the penalty over with a 6. Back-to-back sixes for the batting side. In the previous over, it was Ayush Badonia. This is up in the air. Just fell short of the fielder. Inches short of the fielder. Once again, we are missing the diving effort from the fielders. 200 up, 200 for 4. Coming back on strike, Ayush Budania. What a shot he hit on the previous over. Last delivery. Was waiting for that short delivery from Imran Haq and nicely pulled it down to the deep square leg for a maximum. Flighted delivery. Goes on the back foot. Good delivery that one. Just turning away from the batsman. Just a single. 201 on the board. 3 deliveries to go in the penultimate over. Coming back on strike, Kaustup Pawar. What a mammoth 6 it was down the ground in the first delivery of this over. 9 deliveries to go in this inning. Kaustup on strike. Down the ground, this is played 1 bounce over the ropes, turning out to the next. 105 on the board. The marching continues from the batting side. Kaustup Pawar, 14 of just 6 deliveries. Tossed up once again this time. Wasn't that foolish, wasn't that short, but nicely cut, made some room. Good fielding there by the deep backward point fielder. Attacked that delivery and good throw just above the stumps. 206 now. Last delivery of his spell from Praveen Tambe and last delivery of the penultimate over. Ayush Budania. Goes on the back foot, nicely pulled it down the ground. Just a single, but they are going for the second throw coming at the non-striker, and once again not happy with that effort. There has been some sloppy work in the field out there today. Definitely would get some lectures after the end of this match. At the end of the 19th over, 208 on the board. Imran Haq to continue from the far end. Last over of his spell and last over of this inning. 19 overs done, 208 for 4. 14th season, 3rd day. Thane Premier League, famously known as Upamukhyamantri Chashak, and the main anchor of this ship has always been a respected Vikasji Repale sir, corporator and an Apex Council member of Mumbai Cricket Association. It has been always under the guidance of Deputy Chief Minister, respected Eknathji Shinde sir. Just going through the last over, 208 already on the board. Kaustup Pawar on strike, 15 of 7 deliveries.
This time nicely bowled. Quite foolish that delivery. Ducked in nicely. Played down to the cow corner region. Just a single. Good fielding this time. Just attacked that delivery. Couple of yards and really nice throw down to the non-striker end. Just a single. 209 on the board. 5 deliveries left in this inning. Ayush Budania on strike. 9 of just 3 deliveries. Going right arm over the wicket. Imran Haq. Just changing his field. Just setting it right. 209 on the board. What a delivery it was. Just swinging a little bit just outside the off stump. Quite far away from the batsman, but bowling with some raw pace with that older wide delivery as well. 210 after that one extra run being added. 5 deliveries still left. Still on strike. Ayush. Short of length delivery. It is up in the air. Not the sweet part of the bat. And just a boundary. Good. That's a solid boundary. 214 on the board for the loss of 4 wickets. Back on strike, Ayush. Imran Haq. Quite a long run up. This time slashes it hard down the offside, down to the extra cover region. Beautiful hit that one. Once again, back-to-back boundaries. That I haven't seen your face. Back boundaries, 218 on the board. The previous boundary played down to the square leg region, and after that down to the extra cover region, showing his array of shots. He has shots for each and every delivery. Shorter one, he'll get you pulled down the mid wicket region or the square leg region. If you ball foolish, he can play it down to the extra cover region. Ayush Budania on strike. This time, foolish delivery. This is up in the air, just away, inches closer to the fielder. Just a single. 219 on the board. 219. That's a great total to have on the cards with a good bowling lineup. We'll have to do some catching up, Benetton Cricket Club. 219. Couple of deliveries left. Kaustubh Pawar now back on strike. Batting at a strike rate of 200. 16 of 8 deliveries. Ayush Budania 18 of 6 at the non-striker end. This time hit nicely. Inside out shot down to the extra cover region. Couple of bounces. There is a protection out there. Just couple of runs. 221. Was looking like it was timed quite well. Good fielding there. 221 on the board. Last delivery to go in the 20th over
Kostub on strike. Couple of boundaries in this over. Last delivery. Just a little bit wider. We'll have to re-bowl. 2-2-2 for 4. 222 now. Yesterday we saw some brilliant batting. 263 runs were scored. Highest total of this event up till now, 263. Now 222 for 4. Last delivery. Imran Haq, right arm, round the wicket. Up till now, 3.5 overs, 1 for 45. This time, nicely bowled, quite foolish. That delivery paid down to the cow corner region. Good fielding this. They're going for the second throw. Is coming at the striker end. Good throw, but good piece of running. So at the end of the 20th over, it's 224 on the board for Thane Warrior Cricket Academy, winning the toss, elected to bat first. Did really well. So we'll resume in a short while with the chase on the cards from Benetton Cricket Club. Till then, stay tuned.
पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. CricLive.inच्या माध्यमातून जे क्रीडा रसिक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्या सर्व मायबाप क्रीडा रसिकांचं प्रेक्षकांचं आपण स्वागत करूया आणि वळूया आपण या सामन्याच्या दुसऱ्या इनिंगकडे. आपण पहिली इनिंग पाहिली, दुसरी इनिंग आता काय घेऊन आले समोर ते कळेलच. कारण की ठाणे जिल्ह्यातील क्रिकेटपटूंच्या कौशल्याची गाथा सांगणारी ही स्पर्धा, ज्याचं नाव आहे ठाणे प्रीमियर लीग उपमुख्यमंत्री चषक 2026, ठाणे प्रीमियर लीग पर्व 14. महाराष्ट्र माझा सेवा संस्था युनियन क्रिकेट क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित मुंबई क्रिकेट असोसिएशन मान्यता प्राप्त ही स्पर्धा ठाणे जिल्ह्याच्या तमाम क्रिकेटपटूंच्या जी प्रतिभा आहे, टॅलेंट आहे त्यांचं, त्याला योग्य व्यासपीठ मिळवून दिलं या स्पर्धेने. आणि या स्पर्धेचा आजचा तिसरा दिवस आणि 2 दिग्गज संघांमध्ये सामना सुरू आहे. पंचांचा इशारा येतो आहे, लेट्स प्ले बिगन. आणि ठाणे वॉरियर क्रिकेट अकॅडमी विरुद्ध बेनेटॉन क्रिकेट क्लब अशा 2 दिग्गज संघांमध्ये हा सामना. नाणेफेकीचा कौल लागला होता ठाणे वॉरियर क्रिकेट अकॅडमी संघाच्या बाजूने. त्याने फलंदाजी स्वीकारली होती. एक शतकीय खेळी आपण पाहायला मिळाली. रुद्रच्या बॅटमधून एक जबरदस्त शतक, हे दुसरं शतक होतं या स्पर्धेचं. 225 धावांचं लक्ष्य. सामना सुरू होत आहे. पहिला चेंडू डाव्या यष्टीवर मनगडाच्या जोरावर चेंडूला वळवलंय. 1 धाव पूर्ण होते. धावसंख्येचं खातं उघडलं गेलंय. श्री गणेशा केला गेलाय. सलामीची जोडी प्रवीण तांबे आणि संवेद व्यवहारे ही सलामीची जोडी मैदानावर. लक्ष तर मोठं आहे पण T20 फॉर्मॅटमध्ये आता आपण बघतो की कुठल्याही लक्ष्याचा पाठलाग होतो, चेस होतं टार्गेट. दरम्यान श्रेयांचा हा चेंडू बॅकफुटला, थोडा उसळी घेणारा चेंडू बॅकफुटला येऊन हलकासा खेळून काढलाय चेंडूला शरीरापासून दूर. चेंडू पिक चांगला केला पण थ्रो नक्कीच थोडा वाईड होता. एक धाव घेण्याचा प्रयत्नच नाही आहे. निर्धाव चेंडू येतोय. डावखुरा वेगवान गोलंदाज फार एंडकडनं मार्गक्रमण करताना आपण पाहतोय. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे. एक स्लीप, पॉइंट, कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ, वाईड इज थर्डमॅन. यावेळी वेलबॉल चेंडू पडतोय शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ. तिथूनच चेंडू उसळी घेतोय. फलंदाजांनी चेंडू पाहिला. ठीकसा बॅटो आला नाही पण चांगला चेंडू. विकेट वर हा चेंडू उसळी घेतोय. आज चांगला वेग आहे गोलंदाजाकडे. बाउन्सही त्याला चांगला मिळतोय. 6 खेळाडू उजव्या बाजूला ऑफ साईडला, 3 खेळाडू लेग साईडला. या व्यूहरचनेसह गोलंदाज आपल्या मार्गावर. यावेळी पुन्हा एकदा चांगल्या धर्तीचा चेंडू मधल्या उजव्या यष्टीवर परत थोडा उसळी घेणारा प्रवीण तांबे यांनी चेंडू पाहिला. बॅटच्या मधोमध घेत चेंडूला खेळून काढलंय ऑफ साईडला. निर्धाव चेंडू येतोय. मेहनत, परिश्रम, जिद्द, चिकाटीचं नाव आहे प्रवीण तांबे, ज्यांच्यामुळे अनेक खेळाडूंना प्रेरणा मिळाली आहे. तो फलंदाज लेजेंडरी क्रिकेटपटू प्रवीण तांबे ऑन स्ट्राईक. यावेळी ठीकसा बॅटवाला नाही. पुल करताना बॅटच्या वरती चेंडू लागतोय आणि गोलंदाजच्या डोक्यावरनं मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये 1 धाव पूर्ण केली जाते.
प्रवीण तांबे यांनी आपलं अकाउंट ओपन केलंय, खातं उघडलंय. गोलंदाजी चांगली टिचून मारा केली जाते पहिल्या षटकातच. दरम्यान पुढील चेंडू डावी उजवी जोडी मैदानात, रायटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन. दरम्यान हा चेंडू यावेळी क्लासिकल डिलिव्हरी, टप्पा पडतोय, चेंडू बाहेर कट होतोय. फलंदाजांनी पहिल्या स्ट्रायकावर केल्या, पाहिलं चेंडू बाहेर निघतोय, खेळायचा काहीच प्रयत्न केला नाही. निर्धाव चेंडूने या षटकाची सांगता होते. अप्रतिम षटक हाताळले. फक्त 2 धावा या षटकात खर्च केल्या आहेत. 225 धावांचं लक्ष गाठायचंय. चांगली सुरुवात केली आहे ठाणे वॉरियर क्रिकेट अकॅडमीच्या गोलंदाजांनी. आता कॉमेडी बॉक्सिंगकडनं कुठल्या गोलंदाजाला पाचारण करण्यात येते ते पाहणं महत्त्वाचं आहे. कौस्तुभ पवार यांच्या नेतृत्वात हा संघ खेळताना आपण पाहतो. गौरव याला दुसरं षटक हाताळण्यासाठी दिलंय. कर्णधाराने विश्वासाने कॉमेडी बॉक्सिंगकडनं मध्यम गती तेज आक्रमण गौरवच्या रूपामध्ये. स्ट्राईक एंडला प्रवीण तांबे, सनवेद व्यवहारे नॉनस्ट्राईक एंडला. दोन्ही दिग्गज खेळाडू आहेत. पॉवर प्लेचा उपयोग करावा लागेल कारण लक्ष मोठं आहे. दरम्यान एक स्लिप अजूनही तैनात करण्यात आली आहे. कॅचिंग पोझिशन अवेलेबल आहे तिथे. दरम्यान पहिला चेंडू गौरवचा उजव्या टीच्या बाहेर, बराच बाहेर. पंचांचे दोन्ही हात समांतर येत आहेत. इशारा येतोय, चेंडू अवांतर आहे, परत टाकावा लागेल. अतिरिक्त धावसंख्येचा खातं उघडलं गेलंय. थोडा वेगात टाकताना दिशापासून थोडासा भरकटताना दिसतोय गोलंदाज. ठाणे प्रीमियर लीग चर्चेचा विषय असलेली स्पर्धा. यावेळी ऑन द राईस, स्टँड अँड डिलिव्हर्ड, द क्लास ऑफ प्रवीण तांबे. ब्रँड ट्रेडमार्क शॉट प्रवीण तांबे यांचा. थ्रू द लाईन, ऑन द अप, ओव्हर द लॉंग ऑफ, हाय अँड हँडसम सिक्सर. थ्रू द लाईन खेळतात. द स्विंग ऑफ द बॅट काय जबरदस्त आहे. दरम्यान गौरव पुन्हा एकदा. यावेळी उजव्या टीच्या थोडासा बाहेर, जागेवरूनच बिगिट करण्याच्या प्रयत्नात स्विंग अँड मिस पाहायला मिळते, प्ले अँड मिस पाहायला मिळते. पण आक्रमण करायचंय हे निश्चित ठरवलं आता यावेळी प्रवीण तांबे यांनी. इरादे जाहीर केलेत कारण गरजही तशी आहे. पॉवर प्लेमध्ये आपण जास्त धावा जमवल्या तर नक्कीच आव्हान हे देऊ शकतो. हे प्रवीण तांबे यांच्यासारख्या लेजंडरी क्रिकेटपटूला चांगलं माहिती आहे. गाठीशी मोठा अनुभव आहे. प्रवीण तांबे सामोरे जात आहेत. हलकासा बदल क्षेत्ररक्षणामध्ये. गौरवचा हा चेंडू पुन्हा एकदा हवेमध्ये. ओ, चांगला प्रयत्न केला होता, शेवटपर्यंत अटेम्प्ट केला होता. डायविंग इम्पॅक्ट पाहायला मिळाला परंतु हातात झेल काही येत नाहीये. उंची जास्त होती, रुंदी कमी होती या फटक्यामध्ये, पण 2 धावा निश्चित मिळतात. प्रवीण तांबे यांनी सांगितलंय का आता आक्रमण होणार आहे. ॲग्रेसिव्ह अप्रोच पाहायला मिळतो त्यांचा, आक्रमक पवित्रा. धावसंख्या 2 आकड्यांमध्ये 11 धावा, बिनबाद 11. यावेळी कट इन एअर, स्लिपच्या डोक्यावरनं चेंडू जातोय डीप थर्डमॅनच्या दिशेला. 4 धावा.
जो पेस आहे, जो वेग आहे, त्याबरोबर टप्पा जो उसळी घेतोय, त्यावर फलंदाज स्वार होतोय. फार सुंदर काढला हा चेंडूला स्लिपच्या डोक्यावरनं. जाणून बुजून खेळलेला शॉट होता. प्रवीण तांबे यांच्यासारखा हा दिग्गज खेळाडू अनुभव यावेळी इथे पणाला लावतोय. नाईस लुकिंग स्ट्रोक. क्षेत्रक्षेत्रात वारंवार बदल. डीप थर्डमॅनच्या खेळूला आता सर्कलच्या आतमध्ये आणलंय. मिड ऑफच्या खेळूला लॉंग ऑफच्या दिशेने धाडलंय. एक खेळाडू डीप मिड विकेटला आहे. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. दरम्यान गौरव पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवरून कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून निघतोय. यावेळी नाईस लुकिंग शॉट ऑन द राईजच खेळल्यात. 2 धावा निश्चितरित्या मिळतील. प्लेस चांगलं केलं होतं चेंडूला, त्यामुळे वाईडिश लॉंग ऑफच्या दिशेला 2 धावा. हळूहळू धावसंख्येचा आकार वाढतोय. धावसंख्या धावफलकावर 17 धावा. बिनबाद 17. कमीत कमी 11 धावा षटकामागे करायच्याच आहेत. त्या उद्दिष्टाने खेळताना पाहतात प्रवीण तांबे. यावेळी क्लासिकल ब्लो, पिकअप शॉट, लॉंग ऑनचं क्षेत्र क्लिअर. दर्शक दीर्घांमध्ये चेंडू आणि हा या ओव्हरचा दुसरा षटकार. प्रवीण तांबे ब्रँडेड शॉट. डीप लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं हा षटकार. प्रवीण तांबे अनुभव आपल्याकडे आहे. अनुभव आपण या मैदान उतरायचा सुद्धा आहे. काय 2 ते स्ट्रोक पाहायला मिळाले. एक लॉंग ऑफ वरून, एक लॉंग ऑन वरून. शेवटचा स्ट्रोक तर डोळ्याचं पारणं फेडणारा. धावसंख्या 23. 23 धावा. बिनबाद 23. फॉरेनकडनं डावखुरा वेगवान गोलंदाज सनवेद व्यवहारासाठी. यावेळी बरोबर चेंडूच्या मागे आले. हलक्या हाताने चेंडूला खेळून काढलाय. मिडॉनच्या दिशेला वेगवान धाव. सोटी धाव पुरी. सातत्य ठेवावं लागेल धावांचं. फार महत्वाचं आहे. पॉवर प्लेचा कसा वापर केला जातोय, किती धावा पॉवर प्लेमध्ये स्कोरबोर्डवर लावल्या जात आहेत, हे महत्वाचं आहे. सदवेद बरोबर सपोर्टिंग रोल निभवताना आपण बघतोय. एक धाव काढून प्रवीण तांबे यांना स्ट्राईक देताना पाहता येते आपल्याला. दरम्यान हे द्वंद्व चांगले. प्रवीण तांबे समोर डावखरा वेगवान गोलंदाज श्रेयांश. यावेळी कट केलं डीप थर्डमॅनला, त्यासाठी प्रोटेक्शन आहे. एक धाव मिळेल. उजवाटीच्या बाहेर उसळी घेणारे चेंडू, चेंडूच्या मागे होऊन बरोबर तो कट केला डीप थर्डमॅनला प्रवीण तांबे यांनी. एक धाव पूर्ण होते. श्रेयांश सुद्धा चांगला मारा करतोय. वेग श्रेयांशकडे आहे. ॲक्शन आपण त्याचं रिदमिक रनअप, त्याची बॉलिंग आणि ॲक्शन जी आहे ती पण फार सुंदर आहे. फॉलो थ्रू त्याचा चांगला आहे. दरम्यान सनवेद सामोर जातोय. यावेळी पुन्हा एकदा बरोबर चेंडूला सन्मान देत हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढलाय. शॉर्ट कव्हरला निर्धाव चेंडू. क्रिकेटचा खेळ आणि ठाणे प्रीमियर लीग म्हणजेच लक्ष वेधून घेणारी स्पर्धा. प्रतिभाशाली खेळाडू
उदयनमुख खेळाडू यांचा एकत्र मिलाप पाहायला मिळतो. दरम्यान पुढील चेंडू यावेळी बॅकफुटला जाऊन गॅपमध्ये का स्ट्रोक आहे. फक्त टायमिंग आणि प्लेसमेंटचा हा फटका आहे. बरोबर पॉइंट आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधली जी गॅप आहे, दरी आहे, त्यामधून या चेंडूला काढलं. टायमिंग आणि सोनेपे स्वागा म्हणजे ही जी दरी गॅप शोधली, प्लेसमेंट जागा शोधली. सन्मेद व्यवहारे उजव्याटीच्या बाहेर चेंडू जरूर होता, पण नाईस क्रिकेटिंग शॉट. यावेळी लेग साईडला फ्लिक विथ द रिक्स. पहिली धाव वेगाने घेतली, दुसरी धाव ऑन आहे आणि ती आरामात पूर्ण केली जाईल, कारण 3च खेळाडू लेग साईडला आहेत. त्यामुळे जी मोकळी जागा होती तिथे चेंडूला ढकललं, 2 धावा पुऱ्या केल्या. चांगलं सामंजस्य क्रिकेट पाहायला मिळत आहे, खास करून सनवेर याच्याकडनं. कुठली मोठी जोखीम घेत नाही आहे, चेंडूच्या मेरिटप्रमाणे खेळताना दिसतोय सनवेद. उत्तम दर्जाचा हा फलंदाज प्रवीण तांबे यांना साथ देतोय मैदानावर. धावसंख्या धाबलकावर 31 धावा. यावेळी डिफेन्सिव्ह पुश, बॅक टू द बॉलर. निर्धाव चेंडूनी हे षटक पुरं होतंय, सांगता होतंय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 225 धावांचा पाठलाग करताना बेनेटॉन क्रिकेट क्लब या संघाची धावसंख्या बिनबाद 31. आफ्टर 3 ओव्हर 31 विदाउट लॉस टू चेस अ टार्गेट ऑफ 225 रन्स. बेनेटॉन क्रिकेट क्लब चांगलं मार्गक्रमण करतंय. आतापर्यंत आक्रमण पाहिलं ते प्रवीण तांबे यांच्या बॅटमधनं. सन्मेर व्यवहारे यांची बरोबर संयमी खेळी पाहायला मिळते. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की तरफ से. सनवेद काफ़ी सक्षम है सपोर्टिंग रोल अदा करते हुए प्रवीण तांबे के साथ. प्रवीण तांबे भी एक लेजेंडरी क्रिकेट खिलाड़ी. अब ताबड़तोड़ कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी में पहली तब्दीली देखने मिल रही है. अदनान शेख को बुलाया गया है कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, यानी स्पिन आक्रमण मोर्चे पे लगाया गया है. अदनान के रूप में प्रवीण तांबे सामना करेंगे. फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली भी नजर आ रही है. एक वाइडिश मिड विकेट की जगह पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है. एक डीप लॉन्ग ऑफ पर 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर. चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर. इस बार लेग स्टंप देखते हैं. एक रन तो काफी तेजी के साथ पूरा किया. अंपायर का इशारे का इंतजार. यह पैर से टकरा कर गेंद परिवर्तित हुई थी. लेग बाय के रूप में, इस एक्स्ट्रा के रूप में रन को गिना जाएगा. अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ. दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए इनिंग को आगे बढ़ाते हुए. प्रवीण तांबे और सनवेर व्यवहारे. फील्डिंग में देखिए राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन, इसके मतलब बार बार क्षेत्ररक्षण में तब्दीली करनी होगी. गेंदबाज को भी अपनी लाइन और लेन को बदलना पड़ता है जब राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन मैदान पर. ये काफ़ी असरदार भी साबित होता है. सरदर्द होता है कैप्टन का फील्डिंग में तब्दीली करने का, क्योंकि पावर प्ले का ओवर है. जानते हैं इस ओवर में बल्लेबाज उचित फायदा उठाएंगे. इस बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर. समीर इरवानी सर जो मुख्य अंपायर की भूमिका में. इस बार पैडल स्वीप करना चाहते थे, प्रॉपर कनेक्शन तो हुआ नहीं. अंदरूनी किनार लगा जरूर है और गेंद चली जाएगी. अब सीमा रेखा पार डीप थर्डमैन के क्षेत्र से 4 रन के लिए.
काफी जबरदस्त प्रतियोगिता है ये। यहाँ पे आपको टैलेंट को बताने का, प्रतिभा को दर्शाने का सबसे बड़ा मौका मिलता है। सम्मानीय नगर सेवक और अपेक्स काउंसिल मेंबर एमसीए के विकास जी रेपाले, इनकी संकल्पना और महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके मार्गदर्शन में ये स्पर्धा 14 साल में प्रवेश करते हुए इस बार बल्ले का मुंह खोला, गाइड किया हल्के से, लेकिन पॉइंट के ऊपर सर्कल के अंदर खिलाड़ी तत्परता के साथ क्षेत्र रक्षण करते हुए बिना कोई रन के मेरिट के अनुसार खेलने का प्रयास है। सनवीर व्यवहार का काफी पेशेंस के साथ खेल रहे हैं। इस बार ये पैडल से बहुत बेहतरीन खेला स्ट्रोक को, पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, गेंद चली जाएगी इससे हमारे का पार, स्क्वायर लेग रीजन से 4 रन के लिए फरार। बहुत बढ़िया इनिंग यहां पर आगे बढ़ती हुई सनमित के बल्ले से। वो ज्यादा बड़े हिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से वो स्ट्रोक को प्लेस कर रहे हैं, गेंद को आगे लेकर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया इनिंग इनके। अदनान फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स सामने से, इस बार पैडल खेल दिया था, रन लेना चाहते थे, लेकिन देखा गेंदबाज खुद जल्दी गेंद के ऊपर हावी हो रहे, अपने इरादों को बदला। अच्छा फार एंड से यानी प्रवीण तांबे से ये ना के इशारे, और सबसे बड़ी बात होती है आपको कभी हाँ और कभी ना करना चाहिए, ये भी एक अच्छी सोच का नतीजा होता है। स्कोर है स्कोरबोर्ड पर 41 रन बिना कोई विकेट खोए। इस बार यह कमाल का शॉट है, ये क्या खूबसूरत शॉट है, ये पैडल स्लॉग हिट। आपको 225 रन का पीछा करना है, 11 रन प्रति ओवर के माध्यम से रन बनाने हैं। प्रेशर न लेते हुए आप किस ढंग से ये पावर प्ले के ओवर को आगे लेकर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा उदाहरण। 45 विदाउट एनी विकेट, सनवीर और प्रवीण तांबे इनकी जोड़ी यहां पर जमती नजर आई है, अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई 45 रनों की, और सोच विचार में डाल दिया है अब फील्डिंग यूनिट को कि किस ढंग से वो चाहते कि ब्रेक थ्रू मिला जाए। पावर प्ले में ब्रेक थ्रू मिलना ये बड़ी बात होती है। बार बार गेंदबाजी में तब्दीली, अब फार एंड से भी श्रेयांश को कंटिन्यू किया है। लेफ्ट आर्म तेज आक्रमण, मध्यम गति की तेज आक्रमण को प्रवीण तांबे सामना करेंगे। 5वीं ओवर की पहली गेंद का श्रेयांश अपने बॉलिंग मार्ग से निकलते हुए, इस बार देखिए खड़े खड़े विकेट करना चाहते थे, लॉफ्ट करना चाहते थे, बॉटम एंड पर गेंद लगी है और डीप स्क्वायर लेग पर गेंद ट्रेवल होती हुई 1 ही रन मिलेगा। अपने आप में एक उदाहरण है प्रवीण तांबे, और ये ऐसा खिलाड़ी है जिसके नाम पे पिक्चर बनी है, वो खुद ही एक उदाहरण है। एक बड़े आइकॉन बनाने के लिए खुद में उदाहरण रखना पड़ता है, उसका उत्तम उदाहरण प्रवीण तांबे। फार एंड से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार ये अच्छी गेंद उतने बढ़िया ढंग से खेला है, टॉप ऑफ द बॉल आके गेंद को नीचे रखा है सनवेद ने, बहुत अच्छी तकनीक यहां पर दिखाई दी। गति है गेंदबाज के पास, टप्पा खाने के बाद गेंद मानो ये काफी तेजी के साथ उठी हुई, टेक ऑफ करती हुई डिलीवरी,
लेकिन उतनी सही ढंग से खेला इसे। क्रिकेट इज द गेम ऑफ 3T, टेक्निक, टेम्परामेंट एंड टैलेंट। इसका नाम ही क्रिकेट है। इस बार ये उड़ा दिया गेंद को, लेकिन नो मैच लैंड में खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए क्या रोक पाएंगे? रोका उन्होंने, बहुत बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, काफी तेज गति से गेंद का पीछा किया, गेंद को रोका। 2 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन प्रवीण तांबे जानते हैं कि यह पावर प्ले का 5 ओवर जारी है, सेकेंड लास्ट पावर प्ले ओवर, इसका उचित फायदा उठाना चाहते हैं प्रवीण तांबे। ऑन द राइज, ऑन द अप खेलना चाहते हैं। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर, 49 रन बन चुका है, पार्टनरशिप पनप रही है। और ये अपर कट, क्लासिकल ब्लो, उठी हुई गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, विड्थ मिली थी, जगह मिली थी, 4 रन। के बाहर पटकी हुई, उठती हुई, प्रवीण तांबे ने इस मौके को ताड़ा और गेंद के पीछे आकर यह अपर कट, कमाल का ये स्ट्रोक, क्योंकि स्वीपर कवर का क्षेत्र, इलाका पूरा सुनसान है। स्कोर 50 के ऊपर, 50 की पार्टनरशिप हो चुके, 50 रनों की। इस बार यार आफ्टर शॉट, मिड ऑफ के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद, 2 रन तो जरूर मिलेंगे। बहुत बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर, काफी तेजी के साथ गेंद के पीछे गए, 100 स्टॉप, 2 रन। लेकिन प्रवीण तांबे देखिए, जरूर उम्र जो होती है वो क्रिकेट में कुछ मायने नहीं रखती, आपके अंदर खेलने की जो जिगर है वो काफी अच्छी तरह से मायने रखती है। समर्पण की भावना से क्रिकेट खेलो आप, तो आपको सफलता कदम चूमने वाली है। ये तेज तर्रार ब्लॉकल में डालने की कोशिश, अंदरूनी किनारा, और गेंद स्क्वायरले की दिशा में निकलती हुई 1 रन के लिए। 5 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ, और स्कोरबोर्ड पर नजर डाले तो स्कोरबोर्ड 56 रन, अब तक 56 विदाउट एनी विकेट, यानी 11 रन प्रति ओवर के माध्यम से रन तो बने हैं। और जब ठाणे वॉरियर क्रिकेट एकेडमी की टीम खेल रही थी, उनका स्कोर था 5 ओवर के पश्चात 50 रन, पूरे 50 थे। लेकिन जो चेस होता है वो चेस किस ढंग से किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। सब्सक्राइब ना। काफी गर्म वातावरण है, उष्ण वातावरण, इसमें दमखम की परीक्षा होती है सब खिलाड़ियों की। एक बात जरूर बताऊं दोस्तों कि ऐसे वातावरण में क्रिकेट खेलना काफी कठिन है, लेकिन इस टूर्नामेंट में हर एक चीज के ऊपर बारीक नजर रखिए। आयोजक सम्माननीय श्री विकास जी रेपाले ने, आपके हमारे पास फिजियो डॉक्टर अवेलेबल है, डॉक्टर ख्याति सानी, और सभी उचित व्यवस्था की गई है सभी खिलाड़ियों के लिए। पानी हो, सब कुछ जो इंतजाम होता है, जो मैनेजमेंट स्किल यहाँ पर दिखाई भी देता है। उत्तम आयोजन नियोजन। गेंदबाजी में फिर लगता है तब्दीली करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से। शाश्वत जो पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर फिर गेंदबाजी में बदलाव, शाश्वत को बुलाया गया है, विकेट चाहिए ब्रेक थ्रू के लिए।
कैप्टन ऑफ द टीम शाश्वत, जो इस टीम के सरपंच है, अपने हाथ में गेंद लेकर ये विकेट की प्रतीक्षा को क्या समाप्त करेंगे। सामने प्रवीण तांबे, ये बहुत ही बेहतरीन खेला था स्ट्रोक को, लेकिन स्ट्रेट टुवर्ड द फील्डर। प्रवीण तांबे पूरा अपना अनुभव झोंक रहे हैं इस मैच में, और यही इनकी खासियत है। आप आगे बढ़ते हो तो जो आपके जितने खिलाड़ी उनको लेकर आगे बढ़ना, ये सबसे बड़े बात हुए लेजेंडरी प्लेयर के। ये कमाल का स्ट्रोक था, लेकिन स्ट्रेट फिर खिलाड़ी को पाया वहां पर कवर क्षेत्र में। पावर प्ले का आखिरी ओवर जारी है, आखिरी के 4 गेंद शेष है। प्रवीण तांबे जो इरादे जाहिर कर रहे हैं वो यही है कि इस ओवर को भी बड़ा बनाया जाए। कैप्टन शाश्वत, ठाणे वॉरियर क्रिकेट एकेडमी के, अपने मार्ग पर। स्लोअर वन गेंद, यहीं से पता चला चेंज ऑफ पेस। गेंद के ऊपर से उंगलियां जरूर फेरी, बैक ऑफ द हैंड गेंद को छोड़ा, फिर बड़ा हिट करना चाहते थे, गेंद काफी देरी से आई। 3 लगातार बिंदी गेंदे डॉट डिलीवरी। मेंटली प्रेशर इससे क्रिएट भी होता है। इस बार ये अच्छा ड्राइव है, लेकिन खिलाड़ी वहां पे मौजूद तेजी के साथ रन को मुकम्मल किया प्रवीण तांबे ने, लेकिन अब तक ये ओवर अच्छा गुजरता हुआ। 4 गेंदों में 1 ही रन खर्च किया है शाश्वत ने। जानते हैं इस ओवर की अहमियत को और इस मैच की अहमियत को। 57 रन है स्कोरबोर्ड पर, और प्रवीण तांबे फारिन पर अपना बल्ला चेंज करना चाहते हैं। अभी तक ये पार्टनरशिप जो बनी है, ये अच्छी पार्टनरशिप बनी है, खास करके जो फार एंड पर या अभी स्ट्राइक एंड पर दिखेंगे हमें तन्वेद व्यवहारे, ये कमाल के खिलाड़ी हैं। ये अपना गेम कभी भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं मैच किस ढंग से आगे लेकर जाना है, हाउ टू कैरी द मैच, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यही उत्तम उदाहरण पेश करते हुए सनवेद पहली बार सामना करेंगे शाश्वत के सामने, पहली बार सामना करेंगे अगली गेंद का। ये बहुत ही बढ़िया क्लासिक कवर ड्राइव, लीन ऑन द बॉल एंड ड्राइव द बॉल थ्रू द। बहुत ही आकर्षक ये स्ट्रोक, टाइमिंग प्लेसमेंट का उत्तम उदाहरण। ये ऑप्शन से बाहर तेजी के साथ निकली जगह से, गेंद को खेलना चाहते थे, उसमें कामयाबी तो मिली नहीं, गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात भी नहीं, प्लेन मिस देखने मिला। आखिरी डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्ति। यहां पर 6 ओवर का पावर प्ले का कोटा समाप्त होता हुआ, और स्कोर है स्कोरबोर्ड पर 61 विदाउट लॉस। दोनों टीम जब पहले 6 ओवर समाप्त कर चुकी थी, टीम ठाणे वॉरियर क्रिकेट एकेडमी की जब वो पल्ले बल्लेबाजी कर रही थी, हमारी स्कोरर सारिका में बताते हुए कि उनका भी स्कोर 61 था, इनका भी स्कोर 61 है, यानी कदम दर कदम बराबर चल रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि पावर प्ले का बंधन उठेगा अब, तो चलते अगली कहानी सुनते आनंद श्रेष्ठ इनकी जुबानी।
Dhanyawad Bunty sir. The chase is on. 61 at the end of the 6th over. Both the team at the same position in the power play. Praveen Tambe batting beautifully. 33 of just 21 deliveries. Giving good hands. Samved Vyavare 25 of 15. Ayush Budania into the attack. Nicely played. Down to the cow corner region. Just a single. 62 now on the board. 163 runs required of 83. The asking rate 11.78. Not that stiff. Just setting the field right. You can see more and more fielders outside the 30-yard circle. You can see a fine leg, a third man, a backward point, a cover, a long off, a long on. Flatter delivery just outside the off stump, just left it away for the wicket keeper. Dot delivery. Good start this from Ayush Budania. That was quite foolish. Some extra pace on that delivery. Slogged it down to the square leg region for a single. 63 on the board. 63 without losing any wicket. That's a great start for the chase. Praveen Tambe on strike. Flatter delivery. That's an appeal. But I believe on the way it took the inside edge of the bat. Good delivery, that one. Quite pacey, that one. The previous delivery. Good over this from Ayush. This was played nicely inside out shot. Up above the cover region. Racing towards the fence. There is a couple of fielders trying to field it. But couldn't stop that. 63. Now on the board with that boundary down to the extra cover region. Until then, it was looking like a very good over. Still it is. Just 6 runs off this over. Last delivery to go. This one quite shorter delivery up in the air. Nicely pulled it. Just away from the fielder. Just a single to end over number 7. 68 on the board. Bats, you can see on screens Atul Gosavi with the change of bats for Praveen Tambe. He will be on strike. 68 on the board at the end of the 7th over. What a match we are encountering. The first match in the 3rd day of the 14th season of Thane Premier League. Thane Warrior Cricket Academy versus Benetton Cricket Club. Coming on to bowl, Shashwat Pathak once again, the captain of the side, with 2nd over of his spell. Slower one this time. Not that the timing he wanted. Just a single down to the long on region. Good delivery that was. Not that pacey.
Couldn't time it properly. 69 on the board. 156 required of 77 deliveries. 12.16 the asking rate. Samved Vyavare just holding up one end. Good partnership. Good solid opening partnership this. So over one once again, quite foolish that delivery, driven nicely down to the cover region. Throw is coming at the striker end and that hit directly. That's what they have tried on many occasions, 4 to 5 times. It was there. Just short of his crease, Praveen Thane. But what a knock under this tremendous heat and humid climate. 69 for 1. New batsman coming in, Abhishek. Samved batting at the non-striker end, 26 for 18. Deliveries still require 156. The asking rate 12.32 runs per over. Nicely bowled this, just outside the off-stump corridor. Wanted to drive it on the off with no foot movement at all. Just has come in. Will take some time to settle. Good bowling this from Shashwat Pathak. In the right channels, just outside the off-stump. 3 deliveries to go in this over. Short of leg delivery. This is a raw stuff and a second wicket down in this over itself. It was looking a very solid partnership for the first wicket. Praveen Thane run out and then Abhishek caught and bowled by Shashwat. The fall of wicket of Abhishek brings in Yogesh Pawar. The man who has represented Maharashtra in the Ranjis, played many magnificent knocks. Now here for the side in a sort of border right now. 69 for 2, 156 required now, 74 deliveries. Not much time left in this match either. 12.65 runs is the asking rate. The first match in the third day of the 14th season of Thane Premier League, famously known as Upamukhyamantri Chashak.
Thane Warrior Cricket Academy winning the toss, selected to field first. Got the better of the bowlers of Benetton Cricket Club. The target being 225, 69 for 2. Had a solid opening partnership, but after that, couple of wickets in this over. Once a run out and a caught and bowled by Shashank Shashwat Pathak. Nicely bowled this time on the pads, just flicked it down to the deep square leg region. Just a single, denied the second run. Yogesh opening his account. Back on strike, Samved. Last delivery of the 8th over. 7.5 overs done, 70 on the board. What a stage, what a platform this has been all those years. This is the 14th season. Short of length delivery, made some room, cut it nicely down to the backward point region. Good stop this from the fielder. Couple of runs saved for his side at the end of the 8th over, 72 for 2. This is the 14th season, and all those years, the main anchor of this ship has been respected Mr. Vikas Jire Palesar, a corporator and an Apex Council member of Mumbai Cricket Association. There has been all those years in the guidance of Deputy Chief Minister, respected Shri Eknath Shinde sir. What a platform. Yesterday, there was a big day for all the cricketers out there. Mumbai T20 League auction. Like to congratulate all those players getting selected yesterday. From Thane Eagle strikers, Shashikant Kadam once again retained and selected. By his side, Suved Parker, Atharva Ankolekar, Anish Chaudhary, the first centurion of this edition. Coming on to bowl from the opposite end, Shivam. On strike, it will be short of length delivery, just opened the face of the bat at the last moment, played it down to the backward point region. Good fielding. Short delivery to start the over. Flutter once again, played it nicely, pushed it gently down to the offside, a quick single. Good communication between both the batters out there in the middle. Samved once again coming back on strike. Good start to this over. Couple of deliveries, 1 run. Shivam Gupta to continue from the far end. Flatter one this time, just a little bit shorter. Brilliant fielding from the point fielder out there. Had he missed it, that would have gone down to the boundary. Really good fielding that on the previous delivery. Three deliveries to go in this over. Flatter once again. Just a gentle nudge on the offside. Away to go for a quick single. With that single, score quickly moves on to 74. For the loss of 2 wickets, Yogesh Pawar back on strike. Samved Vyaware, 29 of 21 deliveries. Couple of steps down the track, nicely placed between the gap, backward point and third man region. Really good batting this. Good bowling as well from Shivam Gupta. Check the batsman.
He was just dancing down the track, just kept it a little bit shorter, but was quite awake. Yogesh Pawar over there, a seasoned campaigner, opened the face of the bag, cut it nicely between the gap. 78 on the board, last delivery to go in the ninth over. Tossed up this one, this time played down to the extra cover region. Hits the ropes on a full. Brilliant batting this at the end of the ninth over. 84 on the board. '84 on the board, and that's what we have seen from the first day itself in this season. This is the 14th season. Really good batsmanship from the batters. Suved Parker, 55. Sairaj Patil, 50 runs. Siddharth Matre, 62. Shrujan Athavale, 61. Amit Rathod, 61. Yesterday, Atharva Ankulikar, crucial knock, picked up 3 wickets and 56 runs for his side. The 2-centurion yesterday, Anish Chaudhary, 103 of just 36 deliveries. He made his century of just 34 deliveries. And Rudra Dhande today, 112 of 55 deliveries. A knock to remember for both of them. 6 half centuries we have seen and 2 centuries. A batting paradise, what we call the pitch curator at Dadoji Kondev Stadium, Thane. But definitely there is some support, some assistance for the spinners as well, and some seam movement as well. 141 required of 66 deliveries. 12.82 the asking rate. Arpan Das into the attack. Shot of length delivery just outside the off stump. Cut it nicely down to the extra cover region. Good fielding, there's just a single. Couple of bounces to the wicket keeper. 85 on the board. Just sticking around nicely this partnership. Arpan to continue. Just a little bit flighted on the pads, flicked away nicely down to the short mid-wicket region. 86 on the board. Yogesh Pawar, 13 of 6 deliveries. Started well, Yogesh. In the previous over, a boundary of a cut shot and a 6 inside-out shot. This time wanted to slog it and a wicket goes down. Third wicket down. Brilliant bowling this from Arpan Das. Kept a little bit quite foolish, not that short. Wanted to play it on the onside. A paddle sweep failed and adjudged LBW. He'll have to go back in the dugout. Yesterday was a big day for all the cricketers. Auction of T20 League, Mumbai T20 League. Like to congratulate once again all the players getting selected. Just a short drinks break. We'll be back in a short while.
The batting scorecard, Samved Vivare just got out 30 of 23. Praveen Tambe 40 of 26. New batsman just come in, Narendra Yadav. Trying to slog it. This is up in the air. Wicket keeper getting underneath. Back-to-back wickets. That's the 4th wicket down. Back in the dugout. Just came in and back in the dugout. Narendra Yadav without troubling the scorer. Fourteenth season of Thane Premier League. Upamukhyamantri Chashak. Wanted to slog it right from the first ball itself. Didn't get the sweet part of the bat. Lower half of the bat nicely held by the wicket keeper. 14 years it has been for Thane Premier League. The main anchor of this ship has always been respected, Mr. Vikasji Repale sir, a corporator and an Apex Council member of Mumbai Cricket Association. It has always been under the guidance of Deputy Chief Minister respected Shri Eknathji Shinde sir. What a platform this has turning out to be. Lots and lots of players getting selected in the T20 leagues across the world. The officials for the day, Samir Dhirwani sir and Sagar Mule sir, and a scorer, Sarika Indab. And our physiotherapist, Dr. Khyati Sahani, has an off day today. Couple of days she has been running around the ground in this hot and humid climate. Thankfully today, a little off day for her. New batsman coming in. But she is doing her job right about here. Whoever is getting injured. New batsman coming in. Karan had a good spell with the ball in his hand. Karan Patil. Now he has to wield the willow. Yogesh Pawar, 13 of 6 deliveries at the non-striker end. Arpan Das on a hat-trick. Will this be the first hat-trick of this season? Flatter one, full toss delivery, wanted to bowl a Yorker I believe, but outside edge, goes down, away from the slips, down to the third man region for a boundary. 90 on the board, 9.5 overs in the game. Still require 135 runs to win of 61 deliveries. Still have 6 wickets in hand, the asking rate 13.28. Tossed off delivery this time on the pads. Took it around, down to the fine leg region. A quick single at the end of the 10th over, maintaining the run rate of 9.10, 91 on the board. 91 for 4 at the end of the 10th over. Still require 134 of 60 deliveries. The asking rate 13.40. Won't be easy with this type of attack. Been really good. The bowlers of Thane Warrior Cricket Academy. Winning the toss, elected to bat first. 224 on the board. 225 the target. Shivam to continue. Nicely played. Open the face of the bat at the last moment. Guided down to the short third man region. A quick single. Good communication between both the batters. 92 for 4. Need a solid partnership. Yogesh Pawar, 13 of 6. Till is there at the crease. Anything is possible. Is today his day. We'll watch out for. Goes down the track, played nicely, handsomely down the ground. One bounce over the ropes.
Brilliant hit that one. 96 on the board. Seasoned campaigner. A Ranji player who has represented Maharashtra in many of the matches, played some brilliant knocks. Now definitely his side wants him to bat like a champion. 17 of 7. Showing his class, showing his temperament, showing his experience. That's what Bunty sir said from the back end of our com box. 96 on the board. Flatter one this time on the pads. Couldn't get it off the sweet part of the bat. Just rushes on to the pads. 96 for 4. 3 deliveries to go in the 11th over. Once again a flatter delivery. Good turn on that delivery. Good purchase of the turf. Nice bowling this from Shivam Gupta. After that boundary, a good comeback. 1.4 overs, none for 18 in his spell. Keeping it tighter. 97 for 4. Couple of deliveries left in the 11th over. 128 more required. Nicely bowled on the toes. Nicely helped it along down to the short fine leg region. Good decision by Yogesh not to go for that single. 97 for 4. Last delivery of this over. Goes down the track, played it up pitchly, down to the long off region, just inches short of him. Good fielding though, just a single. Lucky there, the batsman at the end of the 11th over. 98 for 4. Still require 127 runs to win of 54 deliveries. The required run rate up above the 14 runs per over mark, 14.11. Still a strong batting lineup, still 6 wickets in hand. That's doable. 98 for 4. (98 for 4) at the end of the 11th over. Continuing from the com box end, Arpan. This is up in the air. Played up pitchly down to the extra cover region. There is a fielder out there. Couple of runs taken by the batsman. 100 up for the batting side. 100 for 4. Benetton Cricket Club still fighting, still in the contest, still in the hunt for the chase. Arpan Das, 1.1 over, 2 for 9. Tossed off delivery, just a little bit flatter, but slower one than the previous one. Good fielding of his own bowling, but couldn't save that single being taken. 124 more required, 52 deliveries left. Need to go big now. Any one of those two batters. Yogesh Pawar on strike. Tossed up delivery this time, but quite full of that delivery. Nicely driven down the ground. Down to the cow corner region. Just a single. Good throw. One bounce straight to the wicket keeper. 102 on the board. Some breeze blowing on the ground, just helping those players in this hot and humid climate out there. Live from Dadoji Kondev Stadium, Thane. Tossed up delivery, wanted to slog hit out of the ground. Didn't get the sweet part of the bat. Nevertheless, just a single down to the long on region. 103 on the board. Singles won't hurt the fielding side. Yogesh Pawar, 19 of 10. Karan Patil, 11 of 8. Stopped in his follow through. We need to re-bowl. Arpan Das kept it tighter. Dead ball being declared by the umpire.
Oh, now this time Yogesh Pawar gets away from the strike. Some good competition building up. Next delivery would be interesting to watch out. This time slog hits down to the deep square leg region. Just a single. Good fielding though. 104 on the board. Yogesh Pawar, seasoned campaigner, experienced Ranji player. Definitely trying to take this match deep. Karan Patil on strike. Flatter one this time. Good shot this down to the backward point region. Definitely a no ball also has been signaled by the umpire. Along that boundary, free hit coming up. 5 runs will be added to the score. 109 on the board. 116 required of 49 deliveries. A free hit delivery coming up. Nothing wrong with that delivery, but played nicely between the gap, backward point and third man region for a boundary. Last delivery of this over. Flatter one had the license up in the air. The fielder went for that catch. Looks a little bit hurt. I believe he's okay. In action will be Dr. Khyati now. Let's see. I hope everything is okay. Everything is fine with that fielder. Was a good attempt from the fielder. A physiotherapist, Dr. Khyati Sahani, trying to check whether everything is fine. Good. At the end of the 12th over, 110 on the board for the loss of 4 wickets. 6 wickets in hand. 115 runs required of 48 deliveries. 14.38 is the asking rate. Do they have it in them? We'll see in a short while. The chase is on. The contest is on. Is there fire left in the batting lineup? Just as we see some change in the combox end as well. The voice of Thane, Pradeep Desai, Bunty sir will be in the combox. Over to you, sir. थैंक यू आनंद. अब 48 गेंदों में 115 रनों की जरूरत. यहाँ से थोड़ी गेयर को बदलना होगा. यहाँ से जो रन है वो तेज गति से कम 15 रन प्रति ओवर के माध्यम से रन बनाने होंगे और ये बन भी सकते हैं. T20 फॉर्मेट में अगर आप सही लक्ष्य का पीछा करेंगे तो जरूर ये रन बन सकते हैं. लेकिन देखते हैं कैसे ठीक ढंग से डिफेंड करती है टीम ठाणे वॉरियर क्रिकेट एकेडमी की. फार एंड से स्पिन आक्रमण जारी रहता हुआ. राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन मैदान पे है तो ये आशाएं भी हैं. तेरहवीं ओवर की पहली गेंद. इस बार ये पैडल स्लॉग हिट है लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन है. डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी काफी तेजी के साथ गेंद पर आते हुए. 13वां ओवर जारी. पहली गेंद के बाद स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ इस बार आगे बढ़े, कदमों का इस्तेमाल किया, आगे बढ़कर यह कमाल का हिट है. क्या खूबसूरत बेहतरीन अंदाज से इस शॉट को एग्जीक्यूट किया है बल्लेबाज ने. पवार का पावर. योगेश कमाल का ये बल्लेबाज है. टैलेंट है महाराष्ट्र रणजी में ये देखते हैं. गेंद के फ्लाइट को पड़ा और सिक्सर जड़ा. कदमों का इस्तेमाल, फुटवर्क बहुत ही बेहतरीन. योगेश सामना करेंगे. इस बार भी आगे बढ़े लेकिन इस बार लाइन और लेन में बदलाव किया. खींच के गेंद डाली, स्टंप के अंदर फिनिश और पीछे देखा तो विकेट का फर्नीचर डामाडोल. और योगेश जो तेज गति से रन बढ़ाना चाहते थे इस बार कंप्लीट नहीं कर पाया अपना स्ट्रोक.
और काफी चतुराई से गेंदबाजी की, लाइन और लेन में बदलाव किया लेकिन गेंद को खींचा उन्होंने और योगेश पवार बैक टू डग आउट। इंपैक्ट प्लेयर नाम क्या है? अतुल गोसावी जो इंपैक्ट प्लेयर है, जो राहुल सोलकर की जगह पर अतुल गोसावी इन एंड राहुल सोलकर आउट। काफी तेज गति से रन बनाना ये अब इंपैक्ट प्लेयर का काम होगा, क्योंकि यहां से तेज गति के रन नहीं बनाएंगे तो फिर काफी मुश्किल का सामना करना होगा और इसके लिए इंपैक्ट प्लेयर अतुल गोसावी जो पुलिस महकमे से है, और यहां पर देखते हैं अभी गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी। यस, इंपैक्ट प्लेयर अतुल गोसावी इन है और राहुल सोलकर की जगह पर वो इंपैक्ट प्लेयर को बुलाया गया है। काफी बढ़िया ये टूर्नामेंट है, काफी उष्ण वातावरण है, सूरज आग उगल रहा है, लेकिन यहां पर भी मैच ऐसी नहीं कि एक तरफा हो रही है। जितने भी प्रयास आपको करने होंगे, लक्ष्य का पीछा करना है तो फिर आपको भरकस प्रयास करने होते हैं। लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, सिक्सर जड़ने के बाद बल्लेबाज आगे आ रहा है, ये देखने के बाद आप गेंद की लाइन को जो खींचते हैं वो सबसे बढ़िया बात होती है, और यही देखने मिला। योगेश पवार जैसा एक जबरदस्त खिलाड़ी को आपने अगर क्लीन बोर्ड करते हैं तो फिर तारीफ के काबिल है। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर फिर एक बार फार एंड से, इस बार अच्छी गेंद, पहले गेंद को रीड किया और सम्मान के साथ खेल दिया। डिफेंसिव पुश विदाउट एनी रन। इस बार ये अच्छा ड्राइव है डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग अप की खिलाड़ी को बिजी रखते हुए एक रन काफी तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन की चाह जताई और ये थ्रो जब तक विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद आती आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल भी किए अतुल गोसावी ने। उनके ऊपर जिम्मेदारी यह है कि वो स्कोर को तेज गति से लेके जाना चाहिए। इस बार फिर अच्छी गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर, फिर रक्षात्मक ढंग अपनाया। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति यहां पर ओवर नंबर 13 यहां पर समाप्त होता हुआ और स्कोर है 119 रन। 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पैवेलियन पहुंच चुकी है। अब मिडल ऑर्डर बैट्समैन यहां पर किस ढंग से इस मैच को आगे लेकर जाते हैं ये देखना मुनासिब होगा। 14 ओवर जारी होगा यहां पर। अब चाहिए कितने रन देखते हैं, 42 गेंदों में अब 106 रन चाहिए। अगर रन रेट की बात करें तो जितना तापमान बढ़ा है उससे रन रेट भी बढ़ा है। 15.14 ये रन रेट के दबाव में नहीं आना चाहिए आपको। अर्पण दास दोनों तरफ से स्पिन आक्रमण जारी है, 2 विकेट वो ले चुके हैं, आत्मविश्वास से लबालब भरे हैं। जरूर और फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली चाहते हैं गेंदबाज। अच्छी लाइन और लाइन पर आप गेंदबाजी करें तो आपको फल मिलता ही है विकेट के रूप में।
सदी लाइन लेंथ अनुशासन के साथ गेंदबाजी करना, नियंत्रण के साथ। इस बार बड़ा जगह से देखिए पैर हिले भी नहीं, दूर से खेलना चाहते थे और गेंदबाज ने जानबूझकर बल्लेबाज के परे गेंद को डाला, वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप। स्वीपर कवर तैनात है, लॉन्ग ऑफ तैनात है ऑफ साइड में। इस बार ये हवा में बातें करती हुई गेंद आसानी के साथ, ये बहुत ही बेहतरीन कैच, आसान नहीं था लेकिन गेंद पर निगाह बरकरार रखी। लगता था आसान, लेकिन जब सूरज आपके सामने हो और ये कैच आपके पास आए तो मानो उनके आंखों में आंखें डालकर आपको ये कैच लेना है। और बहुत बेहतरीन कैच कंप्लीट किया है अतुल गोसावी को, जिसके लिए भेजा गया था इंपैक्ट प्लेयर। अच्छा शॉट कमिट किया था उन्होंने, लेकिन बेहतरीन कैच से ये मामला समाप्त भी हुआ। या अच्छी गेंद और कर लेन, जड़ से गेंद को खेलता तो बल्ले के जड़ से गेंद को खेला, आखिरी वक्त में स्ट्रोक को चेक किया। बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर किरण सुलकर। इस बार अच्छा कट किया ही गेंद को, लेकिन खिलाड़ी को पाया वहां पर सर्कल के अंदर पॉइंट रीजन में। रन लेने का तो कोई मौका भी नहीं था। डॉट के रूप में गेंद परिवर्तित होती हुई अच्छी सटी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस बार जगह बना के गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन मिडल स्टंप के ऊपर से गेंद गुजरती हुई डॉट के रूप में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है इस गेंदबाज ने। काबिल तारीफ गेंदबाजी, विकेट उनके झोली में है। ठाणे वॉरियर क्रिकेट एकेडमी अब इस मैच पे अपना शिकंजा मजबूती के साथ अब दिखाई भी दे रहा है। SKCS एंड FTL आज दोपहर के सत्र में जो मैच होने वाला है, SKCS और FTL दोनों टीम कैप्टन गेट रेडी। हम स्टार ऑफ द प्लेयर, स्टार ऑफ द मैच का जो अवार्ड होगा उसके बाद तुरंत टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। से आगे बढ़े, कदम को उपयोग किया और आगे रह गए। बहुत बेहतरीन वर्क बिहाइंड द स्टंप बाय द विकेट कीपर, फुर्ती के साथ गिल्लियां उड़ाई और एक विकेट और गिरता हुआ डगआउट की ओर लौटता हुआ। OUT
शुभम लगता है कि मैच किस ढंग से आगे बढ़ेगी, क्योंकि शिकंजा कसा है। ठाणे वॉरियर क्रिकेट एकेडमी की टीम ने एक तो बड़ा लक्ष्य खड़ा किया था 225 रनों का। शुरुआत बहुत बढ़िया मिली थी। प्रवीण तांबे और सनवीर व्यवहारे इन्होंने 61 रन लगा दिए थे बोर्ड पर। अच्छी पार्टनरशिप बनी थी, लेकिन प्रवीण तांबे और सनवीर के लौटने के बाद ये बारी कोलैप्स हुई। हालांकि योगेश पवार ने भी अच्छे हाथ जमाए यहाँ पर। अब देखते हैं कि मैच किस ढंग से आगे बढ़ती है। इस बार फ्रंट फुट ड्राइव, 2 रन के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन 1 रन पे संतुष्ट। आस्ते आस्ते सिंगल सिंगल के साथ अब स्कोर को आगे बढ़ाने की मुहिम में नजर आ रहे बल्लेबाज। गेंदबाज उतना मौका भी नहीं दे रहे हाथ खोलने का। सात विकेट के बाद 121 रन, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार कट किया है गेंद को, लेकिन खिलाड़ी वहां पर काफी चतुर के साथ अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर। शॉर्ट थर्डमैन की जगह पर रन तो नहीं मिलेगा। इस बार हल्का सा लेट कट किया, गेंद को रीड किया, बल्ले का मुंह खोला, लेकिन रन तो यहां पर नहीं मिलेगा। डॉट के रूप में गेंद परिवर्तित होती हुई। इस बार गैप ढूंढा जरूर है, लेकिन स्वीपर कवर पर खिलाड़ी वहां पर प्रोटेक्शन के लिए नजर भी आए, गस लगाते हुए बिना कोई रन के। एक एक के साथ आपको आगे बढ़ना नहीं, आपको बड़े हिट करने हैं चाहे कुछ भी हो। अब 103 रनों की जरूरत, पहाड़ जैसा लक्ष्य, पहाड़ जैसा टारगेट। इस बार कट किया है गैप में, बहुत बढ़िया फील्डिंग, डाइविंग इंपैक्ट। ये जो भावना दिल में जब आती है, जब आपके पास मालूम है कि आप जीत की ओर अग्रसर हो, वो सुगंध, वो महक जब आपको आती है, तो आपके अंदर का आत्मविश्वास जागृत होता है। बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, कंधे तने जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है क्रिकेट में। 102 रन चाहिए अब आने वाली बची कुची 5 ओवर में 30 गेंदों में। अब यहां से आपको आपका सब कुछ, हर कुछ देना होगा। बड़े हिट लगाने होंगे, गेंदों को हवाई सफर के लिए भेजना होगा। अगर वो नहीं हुई तो सफर यहां पर खत्म होगी, ये निश्चित तौर पर है। नॉकआउट मैचेस है, बढ़िया आयोजन नियोजन, ठाणे प्रीमियर लीग या अपने आप में अब क्रिकेट जगत में अपने नाम के चर्चे हो रहे इस टूर्नामेंट के। तो आइए देखते हैं 5 ओवर में क्या होगा नहीं होगा। सुनते हैं आनंद को, हमारे इंग्लिश कमेंटेटर। Thank you so much, sir. First delivery, just a single down to the long on region. Arpan Das to continue. 3.1 overs, 21 for 3. Brilliant he has been with the ball in his hand. 3 wickets up till now. 3 successes he had today. Kiran Solkar back on strike. Need to hit big. 101 required of 29 deliveries. This time trying the onslaught. Will fall in no man's land. Just a single. Didn't get the sweet part of the bat. Just a single. 125 now. 100 required of 28 deliveries. Is it possible? Yes, definitely. It is tough, but it is possible. Yesterday we saw 34 delivery 100.
from Anish Chaudhary. This time nicely played by Dev Kiran down to the long off region. Just a single. Singles won't do. We'll have to wheel where the willow pretty quickly. We'll need some lusty blows. Kiran Solkar, he has that kind of an attitude. He can place those big shots. 126, 99 needed now of 27 deliveries. Flatter delivery just outside the off stump. Guided it nicely down to the back cover region. Just a single once again. Couple of deliveries left in the 16th over. The next match in a short while. Both the captains be ready for the toss. Dev Kiran Chetty. This time a good shot up above the cover fielder. Not a good piece of running, just a single. Need to show some intention, those two batters. 128 on the board. This time, nicely bowled. Wicket goes down, trying to cut it. There was no bounce on that delivery, and 4 for Arpan Das. Really good spell this. Quite happy out there. There was a 4 yesterday. There is a 4 today as well. Arpan Das. It's his day. Brilliant bowling this. Aqib yesterday, Aqib Sheikh bowled brilliantly for his side. Took a 4 and today Arpan Das. Kiran Solkar back in the dugout. New batsman going in, Imran Haq. Was really good with the ball in his hand. Now in a sort of bother, his side. 128 for 8 at the end of the 16th over. 97 required of 24 deliveries. Coming on to bowl from the opposition end, Adnan Sheikh. Both the captains be ready for the toss. SKCA's captain and FTL 11. Good contest on our cards. The next match in some time. 97 of 24. Dev Kiran nicely leaning forward. Just a good push on the offside. Up they go for a single. Imran Haq on strike. What a platform this has been. The 14th year on a trot. The main anchor of this ship has been respected Mr. Vikas Jirepale sir, a corporator and an Apex Council member of Mumbai Cricket Association. Those 14 years has always been under the guidance of our Deputy Chief Minister, respected Shri Eknath Shinde sir. This time, trying to up the ante, trying to play down the ground, no connection of the bat, dot delivery. Good bowling this from Adnan Sheikh. 1.2 overs, none for 14. 129 on the board. Tossed up delivery, played nicely, uppishly, down to the corner region. That's a maximum. Nicely dealt with that delivery. Quite foolish it was in the arc. Really good slog hit. 135 on the board. 135 for 8. 90 of 21. The asking rate 25.71. Like to see more and more such lusty blows. 3 deliveries to go in this over. What an opening ceremony we encountered on the first day. We had Deputy Chief Minister, respected Shri Eknath Shinde sir with us. What a grand occasion it was, along with the main anchor of our ship in those 14 years, Vikas Jirepale sir, a corporator and Apex Council member of Mumbai Cricket Association.
Flatter this time. Really good delivery. Earlier one was tossed off delivery. Played down for a huge one down to the cow corner region. This one a flatter one. Good comeback from Adnan. Once again a flatter delivery, just leaving the off stump by a whisker. Back-to-back dot deliveries. 90 required of 19. Too far away this match now. Once again a flatter one. Three back-to-back pacey stuff from the left-hander. At the end of the 17th over, 135 on the board. The next match in a short while will have the toss, SKCAS and FTL 11. Both the captains be ready for the toss. The batsman has signaled for a helmet. 3 overs left. At the end of the 17th over, 135 on the board for the loss of 8 wickets. 90 required of 18 deliveries. The asking rate quite tough at the moment. 30 runs per over. On strike, it will be Dev Kiran Chetty with the ball in his hand. Gaurav Singh. Short of length delivery to start with. Good delivery that one, just rising. Short delivery. Nicely played by the batsman as well, Dev Kiran. Just a quick single. 136 on the board. Our officials for the day, Samir Dhirwani sir and Sagar Mule sir. Great job out there. Both the officials, our official scorer, Sarika Indap, and our physiotherapist, Dr. Khyati Sahani. Nice wind blowing across the ground right now. Would ease out a little bit for the players in this hot and humid climate, and the heat is building up on the ground. A quick shot bouncer. Just can feel the heat. The batsman Imran Haq was looking good in the previous over. Hit a nice 6 down to the long on region. Once again a short delivery that was way above the head high. Definitely a wide ball being signaled by the umpire. With that one extra run, score moves on to 137. Intentions pretty clear out there from Gaurav Singh. Bowling out with some rigor, with some heart out there. Some short stuffs. Not giving away anything loose to the batsman. Prior to this, he bowled 1 over. 22 runs. Was an expensive one. Gaurav Singh to continue. Right arm over the wicket.
Slower one this time. Nicely played. Down to the deep square leg region. Away she goes for a maximum. Brilliant hit that one. After a couple of short deliveries, definitely the batsman was waiting for something foolish. It was on the pads, nicely helped it around down to the deep square leg region. Brilliant hit that from Imran Haq. This time, very good delivery, good comeback from the bowler. A hard length delivery, just around the middle stump, just rising a little bit. Wanted to slog it once away, wasn't near the ball. Dot delivery. 82 required of 18. This time once again takes the outside edge this time. Nicely held by the wicketkeeper. 9th wicket down. Brilliant bowling this. Caught by the wicketkeeper. Imran Haq on his way. Just clapping the hand. And going back in the dugout. Played well, Imran. New batter going in. Sachin Singh, the last wicket for Benetton Cricket Club. $143 on the board. Just 13 deliveries left in this encounter, in this contest. And I believe just a mere formality now. Just will have to look how it finishes. Still to continue, Gaurav Singh will have a chance in this over to take the last wicket. 1.5 overs, 1 for 29. Just wasn't ready, that batsman. Nicely bowled this time. That's what I said. He had got one chance in this over, and that's all out done. 143. Congratulations. What a win this is for Thane Warrior Cricket Academy. Hard luck, Benetton Cricket Club fought well, but quite far away from the target. We'll be back in a short while with the presentation on the card, and on the mic it will be the voice of Thane, Pradeep Desai, Bunty sir with us. I request both the team. Please come in front of the presentation arena for the presentation of Star of the Match Award. Just a minute. Please gather in front of our presentation arena for the presentation of Star of the Match Award. Team Thane Warrior Cricket Academy and Team Benetton Cricket Club. Rahul,
Solkar, please. And Kastub and team. So I request मी विनंती करीन माननीय उदय गहिने साहेब आणि सनी बुशिंग सर यांना की आपण प्रेझेंटेशन कक्षामध्ये आम्हाला जॉईंट व्हावं. So put your hand together for both the team. What a match that is. Give a best performer in Thane Premier League season 14, day 3 first match. Now time for the presentation of star of the match. That is none other than only one, the second centurion of this tournament, Rudra Dhande. 112 run within 55 balls. क्वालिटी स्पोर्ट्स यांच्यातर्फे त्यांना स्पेशल ग्लोव्ज आणि सन्मान चिन्ह देऊन रुद्र गाडे याचा इथे खास सत्कार केला जातोय. वॉट इनिंग, वॉट इनिंग. रुद्र गाडे अप्रतिम संयम आणि आक्रमणाची ही खेळी आपल्याला पाहायला मिळाली. या सामन्याचा सर्वोत्तम खेळाडू रुद्र. एक मिनिट रुद्र, पहिले अभिनंदन तुझं आज या खेळीसाठी. द सेकंड सेंचुरी, दुसरं शतक आज झळकवलं गेलं. काय सांगशील आपल्या या खेळीबद्दल? मुझे यही बोलना है कि मतलब ऐसे विकेट पे, ऐसे ग्राउंड पे खेलना मतलब इज़ अ प्रिविलेज, और ऐसे टूर्नामेंट में मतलब पार्टिसिपेट करना भी सब लोग लकी है कि हम लोग को यहाँ पे ही एक टूर्नामेंट ऐसा मिलता है यहाँ पे खेलने को. और बॉल्स अच्छे हैं, विकेट्स अच्छे हैं, आउटफील्ड अच्छा है. आई थिंक मतलब मैं तो बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि हम लोग को ये टूर्नामेंट खेलने मिलता है. और बहुत अच्छा लगा आज भी हम लोग को खेल के. उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला. बस उनका बैटिंग सेकेंड इनिंग में अगर थोड़ा और बेटर होता, जैसा उनको स्टार्ट मिला था, वो लोग भी राइट ट्रैक पे थे. बट क्रेडिट टू आवर बॉलर्स कि हमारे लोगों ने कम बैक किया, तो बहुत अच्छा लगा. लेकिन एक बात आपकी इनिंग में देखने मिली कि आपने पहले पेशेंस के साथ शुरुआत की, बाद में जब मौका मिला तब आपने आक्रमण किया और आखिर वक्त और डटे रहे. पार्टनरशिप आपने बनाई, क्या कहेंगे? जाने से पहले भी मुझे केपी ने यही बोला था, जो हमारे टीम के कोच है, और मैं और वो काफ़ी साथ में खेले हैं, तो उन्होंने मेरे को यही बोला था क्योंकि वो यहीं पे रहते हैं. तो उन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ रहेगा, विकेट पे थोड़ा सा डैम्प रहेगा, लेकिन अगर 3-4 ओवर बैटिंग कर लिया तो बहुत इजी हो जाता है उसके बाद बैटिंग करना. तो मेरा वही प्लान था. हम लोग दोनों जो ओपन गए थे, हम लोग का यही प्लान था कि स्टार्टिंग में अगर रन्स नहीं भी आए तो हम लोग कवर कर सकते हैं अच्छी बैटिंग से. क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नए खिलाड़ी हैं और अनुभवी खिलाड़ी केपी कौस्तुभ पवार जैसे कि आपने प्रवीण तांबे जी को खेलते हुए देखा, क्या कहेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में? मतलब कमेंडेबल है कि सब लोग अभी भी आके, और पीटी दा तो कितने सालों से वो कमिटमेंट दिखा रहे हैं, तो हम लोग ये उम्र में तो हम लोग को और मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग भी और एफर्ट देना चाहिए. अगर वो ये हीट में आके इतना एफर्ट दे सकते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं कम एफर्ट तो नहीं दे सकते उनसे. तो बहुत इंस्पायरिंग है, और वही देख के सब लोग मुझे लगता है कि चाहते हैं कि और एफर्ट्स दे और अच्छा करें. वेल डन एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन. और एक सेंचुरी आपके बल्ले से हम देखना चाहेंगे. सो बेस्ट ऑफ लक एंड वेल डन. सो थँक यू व्हेरी मच. दॅट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेझेंटेशन. पुन्हा एकदा दोन्ही संघांना आपण मनपूर्वक शुभेच्छा देऊया. आणि दुपारच्या सत्रातला सामना FTL विरुद्ध SKCS या दोन संघात होईल. ताबडतोब नाणेफेक सुद्धा करण्यात येईल. पुन्हा एक मोठा सामना दर्शक आपल्यासमोर येतोय. पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती आहे की आपण या मैदानामध्ये या आपल्या ठाण्याच्या मानाचा केंद्रबिंदू असलेल्या दादोजी फाउंडेशनमध्ये येऊन आपण आपल्या या खेळाडूंच्या पाठीवर कौतुकाची थाप द्या. वळूया, टॉसची वेळ झाली आहे दुसऱ्या सामन्याची. दोन्ही कर्णधार टीम FTL आणि टीम SKCS या दोन संघांच्या कर्णधार विनंती आपण मेन विकेटकडे प्रयाण करावं. थोड्या वेळात मान्यवरांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होईल. आपण कुठे जाऊ नका, पाहत रहा ठाणे जिल्ह्याची सर्वोत्तम स्पर्धा ठाणे प्रीमियर लीग पर्व 14. धन्यवाद.